यूनाइटेड रोड कल स्ट्रीम नहीं करने के बाद वी आर हियर विथ some injury discussions, some transfer news and some major developments basically in the transfer window जो कि अभी शुरू होने में लिटरली एक हफ्ता रह गया है. We are trying to make some moves, उसके ऊपर बात करेंगे and we are going to discuss the latest updates from Fabrizio Romano regarding Semenyo saga. तो सारी बातें होगी बट पहले कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आपका मंडे, क्योंकि मैं कल था नहीं इधर. कैसा रहा आपका ट्यूसडे? दोनों मुझे जानना है एंड देन वी विल स्टार्ट. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं एक ही चीज बोलता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो करते जाना. वी आर गोइंग टू हैव अ बिग on everything. हाँ, सॉरी भाई लोग, आते के साथ ही नेटवर्क खराब हो गया था. राज भाई, ऋषि भाई, welcome to the stream. And yes, Nathan will be here on my channel for the very first time. Very first time. तबीयत ऑल गुड भाई, ऑल गुड भाई. भाई हाउ आर यू? सब कुछ कैसा चल रहा है ये बताओ. मैं अटक गया था भाई लोग, मैंने रिफ्रेश कर दिया है. अटक गया था, रिफ्रेश कर दिया है. लाइक्स 100 करते हैं, इफ नॉट मोर. इतना तो चाहिए कम से कम. हेलो इंदिरा भाई, हेलो हेलो शौनक भाई, क्या हाल चाल है? चलो, एज आई सेड गाइस, नेथन विल जॉइन इन अ व्हाइल. तब तक हम इधर उधर की बातें कर ले थोड़ी. एडवांस मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू यार. एंड एज आई सेड, 25 लोग देख रहे हैं, लाइक हुए हैं 5. अब मैं क्या बोलूं? इस चीज की कंप्लेंट मैं हमेशा करूंगा, बाकी चीजों के लिए मैं कंप्लेंट नहीं करता. बट 100 लाइक्स करते हैं. नेथन का चैनल भाई लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने ऑलरेडी कमेंट कर दिया है. अरे हरमन भाई, ऑल गुड. क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? हेल्थ इज गुड यार, हेल्थ इज गुड. जैसा चल रहा है अभी ठीक है फिलहाल. जब बैड होगा तो मैं आपको नहीं दिखूंगा. कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों को पता चल जाएगा. जो लोग ग्रुप पे है, जो लोग मेंबर्स हैं, उनको मेल पे पता चल जाएगा. Semenyo, we will talk about Semenyo, guys. We will talk about Semenyo. Let Nathan join. He will be joining in 2-3 minutes. Then I will be talking about Semenyo, Ruben, Neves, and everything that you guys want to talk about. But अभी शुरू कर दूंगा. Then Nathan will also join in. तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि गेस्ट बुलाया है मैंने और उसके बाद मैं बोलूँ कि अरे भाई तेरे आने से पहले तो मैंने सारे खाना खा लिया. ठीक है, सॉरी, माफ करना. वो नहीं चाहिए. तो चलो, 30 लोग देख रहे हैं. लाइक बटन दबा के चलना. एंड वी हैव नेथन इन द हाउस फाइनली. नेथन मेरे भाई, हाउ आर यू? I'm good, guys. Good evening. Thank you for having me on the channel. I'm Very good. How are you? completed for the very first time. Finally, you are here after Finally, I have made plans for like 18 months. crazy, but we're here now. फाइनली वी आर हियर गाइस. एज आई सेड, नेथन का चैनल मैंने लिंक में डाल दिया है कमेंट सेक्शन में एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन. नेथन, सबसे पहले सिंस यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, वी ऑलवेज टेक सम इंट्रो. कि भाई कब से तुम्हारा जर्नी चालू हुआ. जैसे हमारे प्लेयर्स लंबी लंबी कहानियां लिखते हैं, तो मेरे जो पैनलिस्ट होते हैं मैं भी उनको बोलता हूँ कि भाई थोड़ी कहानियां तुम भी सुनाओ एंड देन वी विल कंटिन्यू. Okay, so basically, I'm from Goa, and I started doing this about 4 years ago. Uh, where I am, my friends, I'll be very candid. A lot of them aren't into sports. So I sat there one day. I was watching these channels, certain channels, and I thought, I like this. I like what they're doing here. So I was interested because I wanted to create a community where we can just hang out and have fun. And so 4 years ago, I decided to start doing this.
in terms of YouTube. Now, I believe you are also are talking about United, so that's a longer story. So I'll just make it quick. Yeah. It's very simple. When I moved to Goa first, we used to watch a lot of cricket. But in Goa, I don't know if people know this or not, but especially when I moved there now, unfortunately, it's a bit changing here. But there was a craze in Goa. Every field was turned into a football pitch, especially during the monsoons. Every field. We would play cricket in summer, football in the rains. That was how we were. That is how we played growing up here as kids. Um, so I turned to that on TV. They started showing it here. Goa is a little backward in the sense of development when I grew up here, so it was difficult to get all the channels and stuff. And I remember one day looking at an ad, and it was Bex's goal against Wimbledon. And I'll be very honest with you, I didn't have a clue. I thought it was the most magical thing on earth, seeing that goal. I didn't know about Manchester United. I knew nothing. There was no internet back then. There was only what you see, and if it ever came on the paper, it's only what you read. There was no magazine culture here in Goa, so you couldn't get that either here. To be completely honest, so I always summarize it by saying it like this: I got to Manchester United because of Beckham, but I stayed because of Sir Alex. Uh, for all the younger audience, people might wonder, not a favorite player, not that. Um, I was going through a tough time moving to Goa. The language was an issue, at least outside of school. Uh, so what happened is I used to feel very low, and on the weekends I would look forward to the weekends because Sir Alex Ferguson gave you that confidence. Sir Alex Ferguson almost gave you that sign that you're going to have a good day today. And I really look forward to weekends. And I think the losses as a kid was even more devastating because when you have a tough week at school and you come back and you're looking forward to seeing that stalwart in your life that gives you that hope and happiness. um yeah, that's why I say I stayed for Sir Alex. I looked forward to every weekend after that, ever since I was hooked. But I came here because of Bex, and I stayed because of Sir Alex. And watch, I remember him retiring, and I didn't, if I'm being completely frank with you, I didn't know if I was ever going to watch football after that season. I was absolutely devastated. And here we are now. Sorry for the long story. अरे Here we are we now. are all here for the stories because Yeah. क्लब की स्टोरीज अभी तो है नहीं ना नितिन. The thing is. Not these players, that's for Yeah, sure. exactly. These players, they don't have stories apart from basically a Bruno Fernandes, you can say, at this point of time. उसके अलावा किसी की stories है नहीं. But जितने लोग भी chat में, सबको hello है. शशि भाई, we have सोनक भाई in the house, Clippy, आयुष भाई, सबको नमस्ते, सबको hello. सबसे पहले नेथन के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है guys. The link मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, and I have also put it and tagged it in the comment section as well. सबको सबसे पहले हम सेमेन्यो से ही शुरू करते हैं भाई लोग, बिकॉज सेमेन्यो 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 इज एवरीवेयर. सबको मेरे थॉट्स पता है, बट टुडे रोमानो भाई, अब वो टिकटॉक पे भी लाइव जाता है, पता नहीं, मेरे को पहली बार पता लगा है मेरे को आज, दैट दिस गाय गोज टू टिकटॉक लाइव. ठीक है. किसी ने स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाला है. ठीक है. सो गाइस, अगर कोई टिकटॉक पे कह रहा हूँ मैं, टिकटॉक पे है, इंडिया में बैन है, बट अगर आप लोग हो जो बाहर से लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, फब्रिजियो रोमानो गोज लाइव ऑन टिकटॉक एज वेल. ठीक है. सो वो भाई, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो हर जगह से पैसा छापेगा, एंड ही विल रिटायर बाय द एज ही इज 40-42. आई थिंक दैट्स हिज प्लान. ठीक है, कि अभी जितना छाप सकते हो, हैप्पी बर्थडे, जो भी कुछ करके अभी पैसा छाप लो, बात की बाद में देखी जाएगी. एंड ही सेड ओवर देयर दैट फॉर सेमेन्यो, यूनाइटेड विल चेंज द फॉर्मेशन टू ब्रिंग सेमेन्यो टू द क्लब. All right. Yes, Nathan, yes. That was my reaction as well. Because I said that in the video that I posted a day ago. I won't mind Semenyo at all. But then, where would you fit Semenyo? And I asked the chat, everybody. Guys, if Semenyo comes in and if this is the system, he will play as a left wing back because there is no other spot available for Semenyo. Semenyo as a player, why would he change his playing style all of a sudden? Because he's scouted, not scouted, basically wanted by City.
He's wanted by Liverpool. He is now wanted by Chelsea as well. They are also in the race. So he has three clubs that can offer a lot more than us right now. And if we go to that player and he's like, bro, you know what? Forget UCL, forget you have a chance to win the league. Come and play wing back in my 3-5-2 system. So what do you think? Semenyo, first of all, do you think he will come, Nathan, even if we are changing the system? And two, if not us, then which club do you think he will be going to? See, there are many reasons why he should sign with United. None of them being the formation, unfortunately. Yep. Uh, I told people, get ready, guys. We're signing Semenyo, right wing back, and people were like left wing back. I'm like, no, Dallow's there, and people laughed at me, and I'm like, y'all can keep laughing. He's still the best player we have. Everyone can laugh as long as they want, but he's still the best player we have. And I can break that down if you want to know my theory on Dallo, but it's not important right now. But Gala people is the said, leader. That's what I'm going to say. no, Nothing no, else. no, no. I'll give you. See, I'll give you what if you ask me later on. I won't give you Definitely, definitely. the flow. I will tell you exactly before the beginning of the season why I thought, and I even told Mohawk by the same thing, that it's very important he has a good season this year. And I'll tell you if you're interested later on. I'll tell you. Definitely, definitely. But We I will but get I back to that. definitely but I Yeah. definitely told everyone he's going to play wing back, and everyone laughed at me. And I'm like, bro, this guy is not going to change his formation. It's very clear he won't. And people were like, what about the other day where we were playing 4-4-2 off the ball or without the ball or whatever? And I'm like, you have to understand how many injuries and AFCON exits we have. He's not doing this out of fluidity. Exactly. He's doing this out of survival. It's not the same thing. When you do something out of choice and when you do something out of pressure and force, you have no choice. You're Exactly. desperate out of desperation. It's not the same thing as tactical fluidity. And I think I think he should sign for us, but only if he's willing to play wing. I don't think we're changing the formation because it doesn't make sense. Why didn't we do that 10 months ago when we needed the wins in the league and we would have finished in a better place? So I don't really believe that. And I'll be very honest with you, Anshuman. I'll be incredibly disappointed if he changes the formation now because Same. because it basically means he and only he has ruined our season last year. We Yep. cannot blame the players. We cannot. I know everyone wants to blame Ineos. I'm sorry, you can't blame them. You really can't. And so that is my take. Why he should sign for us is very simple. At Man City, he will always be options. You play FPL, Anshuman, so I don't need to tell you. We don't take City players unless they're Erling Haaland. Exactly. That is how you should play FPL when And it now comes to Foden. Now Foden. now Foden. But there is no guarantee. There is no guarantee. One time he plays Cunha at wing. I mean Nunez at wing. Sorry, not Cunha, Nunez. Everyone's Matthews, Yep. everyone's Ruben. It's confusing. But if he wants to be a bit part player, I think Jack Grealish is a little bit of an example. I'm not saying Jack Grealish is a bit part player, but he played a bit part in that. He was the talisman, the star at Aston Villa, got them up, everything. And then he had one good season, and then he was slowly getting phased out because he wasn't allowed to have that freedom. Because Pep doesn't want you to have that freedom. Pep wants you to stick to a certain way. He does not care about your personal attributes. Otherwise, Yaya Toure wouldn't have left when he came because Yaya Toure was on fire at that point of time. So, and that obviously happened at Barcelona, even for people who don't know. He left from Barcelona to come to Man City, and then from Man City, he left again. It is like Juan Mata and Mourinho. He went from Chelsea to United, then again he left. But in my opinion, Man City is his best chance because I'm sure he'll be interested in winning something. Liverpool, they are in a lot of turmoil right now, and there is no guarantee what is going to happen to Salah. It seems there is a way back for Salah. He is not going to replace Salah if there's a way back for him. I think his is his best chances to come here because if someone falls out of form, I believe Ruben Amorim will give him a chance for sure. So that's the thing, if he comes as a wing back, you Yeah. know, I don't want him as a wing back. That's the No, thing. nobody wants him as a wing back, but that's where he's Exactly. going to play. That's where Yeah. he's See, going to that's the play. thing. See, that's the thing. Yeah. I am tired of seeing players playing out of position. First of all, Yeah. people Double. who I wants agree. to, people who wants to go us, me and Nathan for the dialogue Yeah. topic, we will go Yeah. each, against each other later on. Yeah. But when we talk about Semenyo,
सेमेन्यो भाई, जस्ट बिकॉज, ठीक है, जस्ट बिकॉज अभी के लिए, ठीक है, हमको ये लगता है कि भाई वो बंदा बॉर्मथ के लिए पीछे जाके कर लेता है सारे काम, तो उसको विंग बैक खिला दो। क्यों? क्योंकि ही इज ऑलरेडी डूइंग दैट डिफेंसिव ड्यूटी। मेरा ये है मानना, आई विल बी आस्किंग यू गाइस एज वेल, जस्ट बिकॉज उसको वहां करना पड़ रहा है डज नॉट मीन को उससे आप यहाँ पे करवा लो। ही प्लेज इन अ टीम जहां पे उस तरीके का एक कल्चर है, बिकॉज दे आर, लेट्स बी ऑनेस्ट, अ वेरी वेरी स्मॉल क्लब। Yeah. ठीक है, वहां पे हर बंदा अपना 100%, और यहाँ पे भी देना मैं चाहता हूँ वो दे, बट देन वहां पे वो पीछे भी जाते बिकॉज दे वांट टू टेक द बिग मूव, द नेक्स्ट मूव। अगर उसके पास ऑप्शन है चेल्सी, लिवरपूल, एंड एज आई सेड, आई वुड लव टू सी हिम हियर, नॉट एज अ विंग बैक। ठीक है, वहां पे चेल्सी बोलेगी भाई तू हमारा स्टार्टर बन जा। ठीक है, दे आर लुकिंग फॉर अ विंगर एनीवे। ठीक है, यस, एज यू सेड, मैन सिटी में भाई मुश्किल है थोड़ा, लिवरपूल में साला, यू नो साला एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी डोंट नो वेदर ही विल बी देयर और नॉट बाय द नेक्स्ट सीजन। वी विल हैव टू वेट एंड सी, एंड उसके हिसाब से लिवरपूल किस तरीके से करेगी उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। But I am, as I said, the only reason I don't want him is because I don't want another winger on the wing back position. He has already fucked it up. He already fucked up our transfer window in the summer by saying Ahmad will be our wing back. और जैसे ही बड़ा गेम आता है ये सबसे पहले अमाद को ही बाहर कर देता है वहां से। आइदर ही विल प्ले ऑन द लेफ्ट, आइदर ही विल प्ले ऑन द राइट, बट जैसे ही बात आती है कि भाई अमाद कहाँ है विंग बैक, अमाद गायब। ठीक है, पीपल टॉक अबाउट कि भाई उसके गोल्स है, असिस्ट है, भाई 2 गोल है, 2 असिस्ट है। ठीक है, अगेंस्ट विच टीम्स ही स्कोर्ड वो देख लो। Yeah. ठीक है, लिटरली दो टीम्स जिनको हमको ठोक देना था। ठीक है, एंड द गेम्स दैट ही स्कोर्ड इन, वी डिड नॉट विन दोस गेम्स। यस, ही सेव्ड अस अ पॉइंट। Yeah. आई एम नॉट सेइंग ही इज अ बैड प्लेयर, Yes. but then you have misprofiled Ahmad. You have misprofiled Kobbie. You have misprofiled, lot of players right now, to be very honest. He's not. He's misprofiled. I was going to say he Bruno, misprofiled exactly. Bruno. I Bruno. just think. I just think he wants him to play there, though. I think he knows exactly what Bruno can do, but he just wants him to play there. No, I don't even see, think it's a misprofiling issue for Bruno. I think he's I decided think that is just that he ego wants. issue, भाई. To be very honest, it's Yes, not even misprofiling issue. That's ego issue. ठीक है, it is a issue where he is like, अरे मरा लो तुम अपनी यार, मैं तो यहीं खिलाऊंगा, तुम्हारे को रोना है रो लो, गाना है गा लो। I am going to play this guy in this position, exactly. और कुछ नहीं हो सकता। Yeah. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई आई कॉल्ड हिम आउट व्हेन ही सेड कोबी इज द बैकअप ऑफ ब्रूनो। और मैंने जब ये उसने बात बोली, मैंने उसके अगले दिन बोल दिया था पूरे के पूरे चैट को, और जितने लोग चैट में हैं, मुझे बताना जरूर भाई लोग कि मैंने बोला था कि नहीं। मैंने बोला ये पूरे सीजन नहीं खेलेगा कोबी। इफ ही इज सेइंग कि वो ब्रूनो का बैकअप है, तो ब्रूनो तो भाई सब्स्टिट्यूट ही नहीं होता है। Yeah, ब्रूनो I प्लेज saw. I 90 think मिनट। I think I saw you live when you said that, and even I thought. एग्जैक्टली। And if I may add to that just quickly before you continue, is the one thing I didn't like about him saying that is now everyone is going to ostracize Bruno, because now he's basically saying Bruno's my captain, he doesn't get injured, he's not going to be substituted. Every time Bruno has a bad game, they will say, oh, it's Bruno's fault. And I have a feeling he has made at least at the beginning of the season, it felt like Bruno's scrutiny was going to even get more amplified, because now he's not gone to Saudi. Now, thank God, we have cleared the air, so we don't have to talk about that at least anymore. But now the Kobbie statement still stands, right? The Saudi statement is over. We have clarified, but the Kobbie statement continues. And now every time he has a bad game, then everyone will go. Anderson could have come, Baleba could have come, Kobbie could have come. Then it's just more pressure on the team again as usual. So, एग्जैक्टली, सो दिस इज द थिंग, एंड आई विल टेक सम, आई विल टेक फ्यू चैट्स इन हियर एज वेल। डेथ स्पेंस की बात आ रही है, उस पे जाएंगे, बट उसके पहले थोड़ा साहिल भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग बैक एज अ मेंबर है। Really appreciate all the love and support that you give us, guys. We have Goal Away Liverpool fan in the house, High on Football, we have Spurs fan in the house. So guys, सारे channels please आप लोग सब्सक्राइब करते जाना। It's a community. I always keep on saying it's a community. आपको क्लब पसंद नहीं है, ठीक है, आपको अगर कोई क्रिएटर की बातें पसंद आती है, you have to, you can follow them. I always say that you don't have to like the team. I absolutely despise Liverpool. I don't despise UDY. I don't despise Spurs, of course, because there is nothing to despise about Spurs. ठीक है, वो वही वाली बात है, तो फिर नो 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 पन टेकन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट यस, कुछ क्लब्स है जिनको यू हेट, कुछ क्लब्स को यू डोंट हेट। ऑफ कोर्स यू वांट टू बीट एवरी क्लब, बट यू डोंट हेट एवरी क्लब, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो वाली चीज है। मेरा एक सेमेन्यो से रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन है, नेथन, दैट व्हेन वी टॉक अबाउट अ सर्टेन विंग बैक,
you know, you had left wing backs available in the market in the summer window. You have right wing backs available in the market in the summer window. But the, you know, Portuguese hair gel seller said no. You know, we have Amad Diallo, ठीक है, उसको मैं खिलाऊंगा। लेके आया, 4 गेम नहीं खिलाया उसने Yeah. डोरगू को बेंच कर दिया। Yeah. ठीक है, डोरगू को बेंच कर दिया। सो इफ यू आर ब्रिंगिंग इन यंगस्टर्स, you know, and then you talk about performance and all, and I'm not saying कि जो अच्छा नहीं खेल रहा है उसको बेंच मत करो, but you were very very quick to bench Yeah. the youngsters who did not Yeah. perform. You Yeah. know, you have played the same midfield for 15 games, get absolutely teared apart in 15 games, and you did not have the guts to change your midfield. Yeah. Uh, You know, and when, I no, and when yeah. we talk about Semenyo, we still have Demarco available in the summer. You know, there are credible reports that says that he wants to leave. You know, but if not a proper club comes in, then he will sign a new contract with Inter. What would you say that Semenyo को फिर से वही लेफ्ट विंग बैक क्या बोले? See, the problem with uh, Semenyo is a particular is an interesting one for in the sense that Ruben Amorim has actually met him. You know, the annoying thing about Antoine Semenyo is I don't know what happened to him. He was supposed to come in the summer, and basically he signed a new deal with a release clause. Now people were like, he did that, to give Bournemouth some money, and I'm like, bro, what? This is not, unless Bournemouth is your childhood club. No, what is this? Benevolence. Or we'll give you some money for him. Otherwise, he's going for 20 or he's going for free. My issue is very simple. If Antoine Semenyo didn't want to stay any longer than this year, 2025, 2026, then why sign a new deal? No, just leave. No, take whatever 25, 30 and go. What is this, holier than thou, put release clause, I might. What if he had a bad season this year? Who was going to go for him? So this is my thing. This is very frustrating. And now when you say we have DeMarco, someone said Robinson in there. I would love Anthony Robinson, but he's been pretty No, injured, I Spence believe, this Spence season. was, yeah. Spence, Antoine Robinson is injured. Jet Spence, yeah. somebody said Jet Spence as well. By the way, Jet Spence, for people in case you all are new to United or you have followed it after the fact, when James Garner was at Nottingham Forest, Jet Spence was in Middlesbrough on loan to Nottingham Forest. And at that point of time, we were looking at Jet Spence. At that point of time, we were interested in Jet Spence. I do not know where the current link is, but we have been interested in Jet Spence since we sent Jimmy Garner on loan to Nottingham Forest. In terms of, back to me saying the Semenyo thing, I think it's the problem here is that he has had so much influence and hand in already meeting Semenyo that Semenyo might actually be interested in coming here just because of the hands-on approach Ruben Amorim allegedly had dinner with him pre-season. So I think we are favorites, and I think he is going to play wing back, and I think many people are going to get very annoyed Exactly. if he comes here. That is the thing. I will take few comments and then Yes. I will also talk Yeah. about Just give me a some other second. I'll stuff. be back. Yeah. Absolutely, absolutely. सबसे पहले तो W's in the, ठीक है, W's in the chat हो जाए यार पहले, ऑफ कोर्स दुष्यंत भाई के लिए, एंड जिनको नहीं पता कि मैंने क्यों बोला है शशि भाई के लिए कि भाई, यू नो, ये जो मैंने डाला है कि भाई थैंक्स अ लॉट फॉर द सपोर्ट, क्योंकि इनका सपोर्ट भाई मेरे को यूपीआई पे आ जाता है ठीक है, ही इज लाइक मैं यूट्यूब को तेरे पैसे नहीं लेने दूंगा साले, यूट्यूब वाले मैं तेरे को यूपीआई पे कर देता हूँ, सो ही सेंड्स मी यूपीआई. सो Great. शशि भाई थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. Excellent. इट्स नॉट लेटिंग मी चैट भाई, मेरे ये चुतियापा यूट्यूब का पिछले कुछ टाइम से चल रहा है, यू नो, वेयर यू आर अ सब एज वेल, देन ऑल्सो दे से कि भाई 1 मिनट के लिए सब्सक्राइब करो एंड देन यू कैन चैट. तो आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद देम, बट दिस इज हैपनिंग फॉर द लास्ट 5-6 days, यू नो. Oh. Okay. सो वही वही वाली चीज है. सो इफ किसी को प्रॉब्लम हो रहा है अनसब्सक्राइब करके वापस सब्सक्राइब कर लो, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, इट्स जस्ट अ ग्लिच इन माय ओपिनियन, आई होप दे फिक्स इट एज सून एज पॉसिबल. एक कमेंट था यार यहाँ पे, अच्छा, आई एम ओनली से एक्सपेक्टिंग योर चैनल. Pranoy, actually, I did the watch along the other day. The thing is, YouTube does not push the notifications out as well. Speaking of an issue YouTube has, but I Exactly. did the watch along live actually.
Exactly. And this is what I was talking about. United are ready to change their system. I don't want that. I don't think, भाई चल मैं थोड़ा चार्ट ले लेता हूँ. Anybody Yeah. wants, anybody, चलो यार मैं यहीं पे लिख देता हूँ. Anybody wants to change system to accommodate one player. चलो भाई इसका आंसर दे दो. नेथन से एक सवाल आया है शशि भाई का. आफ्टर हु आफ्टर सैफ वाज बेस्ट मैनेजर? नेथन, यू हैव टू आंसर दैट. For me, I have a. Wait, we are talking about only United managers. The Yeah, yeah, of course, answer is of very course. obvious to me. I think Anshuman knows what I'm going to say. well, well, well. It can be OGS 20. It can only be Yeah, him. It can बस only be him. मेरे लिए I भी. mean, seeing him back as a coach, every win we had was the highest of highs. I mean, he is a man that it's hard not to love. It's hard not to love. Really. Exactly. I always said that, if he was backed properly, and I said that, for some other managers as well, Yeah, of but course. especially for Ole, Yeah, you know, if he would have stayed and he was backed properly, yeah. it would have been a totally different thing for somebody like Ole. You You know, know what, Anshuman, you know what is really disappointing? What really is disappointing is I don't know if I think I believe I've said this to you when we were on someone else's stream. I can't remember right now, but I believe it was Ash's stream actually. In fact, I have this opinion. I could be very Mm, wrong, but right now the evidence proves that the modern day managers are not very good at man managing, absolutely. specifically man management. And you know what I loved about Ole Gunnar Solskjaer? Nobody had a falling out with him. He pat on the back, finished second, finished third. Even the season we finished fifth, the half season he went on a 16 game run, unbeaten run. Like I've never heard anyone say anything bad about him. Not one player. Everyone was sad he left. Everyone's shoulders and head dropped. And you know that before and after Ole Gunnar Solskjaer, we have not seen that. You know, I'll give you a best example. Eric Ten Hag. Ah, God, I can't stand him for what he did today. I know you know my stance on that, so I'll move on. But No, a lot the of one, things that he did, we cannot stand it. yeah, Nathan, in the hindsight, yeah. but you know what, Anshuman? The one thing I found very interesting when he got sacked. Kobbie Menu said, "Thank you for the love. Thank you for teaching." Garnacho, everyone who gives bad words to now, said the same thing. You know, he ego, mini Ronaldo, mini. I'm like, this man actually got the best out of him. Ego or not ego, that you can't take it away from him. You cannot. You don't have to like him. I don't like him. I don't like him. But he did get the best out of him. You cannot deny that. He got the best out of Kobbie Menu to the point where we see the man in 18 months play Euro final. Euro final. He has done things, and I noticed the people who did not wish him well. Marcus Rashford. Because why? Because he was being replaced by Garnacho, right? That was bothering him. He was being replaced by a child. Casemiro. You know, I actually the Casemiro one's a little confused, but I noticed Casemiro didn't bid him farewell either. But नहीं नहीं, everybody कैसेमिरो के टाइम पे वो था नहीं. सॉरी नेथन, ही वाज नॉट देयर फॉर कैसेमिरो. कैसेमिरो वाज ब्रॉट wasn't इन बाय, नो, कैसेमिरो वाज ब्रॉट इन बाय दिस गाय, no एरिक टेन हाग. No, नॉट ओले. no. I'm talking about Eric Ten Hag only. I'm saying I Yeah, was oh, yeah. Oh, No, yeah, no. my bad. What I Yeah, no no what I was saying is that you know Eric Ten Hag had advantages, but he had deficiencies. Yo, Ole Gunnar Solskjaer just didn't get back. People loved him. The youth loved him. He gave youth a chance. He famously, not to bring it up, but he sat in Australia. Some person asked him, "My God, you have all these forwards. Who's your best finisher?" He said Mason Greenwood. Everyone was confused. They were like, "What? Mason Greenwood? Mason? But you have Rashford, Mr. 30 goals. You have Martial, French wonder kid." And then he was like, "No, Mason Greenwood is the best finisher in the club." And we all were like, God knows what this fellow has done in Australia. Let's see." And then we were mind blown. That 1 year where we made 70 plus goal contribution is the only year we have made 70 goal contribution since Sir Alex Ferguson. Martial, Greenwood, Rashford, fluid front three. They switch all three positions. So he was loved by the youth. Eric Ten Hag was loved by the youth but were hated by the senior players. Then Ruben Amorim can't manage youth players. Some experienced players can't manage egos of certain players, whether they are young or old. So this is the one. This is why my favorite manager is Ole Gunnar Solskjaer. I feel like he struck a very good balance, very old school approach, hand on the back, manages behind the scenes, manages in front. So sorry for the long-winded answer, but that is why he's my favorite manager.
and I miss him dearly. I miss him dearly. I have to Absolutely. be Same honest. as, same as I always said, and I had the privilege, and I always said with a big, big, big smile, I Yes, had the privilege to yeah, you met meet him. him. I met him, I had a picture with him, I talked to him for more than an hour, so for me, and you could see that, Yeah, I was there and I could see on his face still, still how much he at loves this him. point of, exactly. He, the moment there are certain questions, and I know it will get a bit longer, but we are here Yeah, to talk, and I will yeah, take the questions. As I said, guys, I will take the questions, I am marking the questions, so have some patience. yeah, Okay, just have some patience. ये मिडफील्ड वाला क्वेश्चन भी लूंगा, कोबी वाले पे भी आऊंगा, सारी सिचुएशन वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, ठीक है, बट when you asked the question, he just said, the things that he actually felt at that time, the interviews that came on the overlap and everything yeah, later on, yeah, he already talked about it, yeah, in front of few people, yeah, already, he said who let, of course he was not going to, ठीक है, एक एक बंदे का वो नाम नहीं लेने वाला था, लेट्स बी yeah, ऑनेस्ट, yeah. he was not He going said to he take said people dropped their heads. He said people gave up. He said that. But exactly, he so did what not, I'm trying he to did say not is mention it her. wasn't what how to put it. It wasn't civil war. Like Ayush basically said, Nathan, the players did give up on Ole. Yeah. To be completely fair, Ayush, the players have given up on every manager. The problem is Exactly. no, the internal disasters no were minimized. That's what I think he is responsible for the. Let me give it to you in a better way, Ayush. He had to go meet the protesters because of the Super League. They stormed Old Trafford. They got through, and he was there. Please calm down. Trust it. We have the. You think if that was any other coach except Ole Gunnar Solskjaer, you know what? They wouldn't have listened. I'm telling you right now, the fans wouldn't have listened. They would have created a whole lot of menace in Old Trafford. Let's be honest. And if you don't believe me, Chelsea did the same move with Peter Cech. They did the smart move. They sent Peter Cech out there because they know no Peter Cech is going to calm them down. That is the right person to send. That say what you want about Glazers. That was a very smart move sending Ole Gunnar Solskjaer out there instead of one of the corporate donkeys. To say Exactly. buzzwords so they can get abuse later on. Exactly. Guys, दुष्यंत भाई का कमेंट आया था, दुष्यंत भाई, आई विल गो along with this. Tactically, अगर वो सेंस मेक नहीं करता दुष्यंत भाई, we won't have gone 27 games unbeaten. Yeah, No fluke manager can do that. 27 games unbeaten away. It doesn't happen. We have this record, and I don't know who is going to break this record. We not this have this manager. record, Not this and we manager. have this, not this manager. I don't know even in the Premier League who is going to beat this. At this point of time, who is going to beat this? I will have to wait and see. The current crop. I'm not talking about the veterans. I'm talking about the current crop, the newer ones. Who's coming? Who can go 27 games unbeaten? You Yeah, can say he did not have a plan B because there was no squad. You can definitely say he did not have a plan B, and I will definitely agree to that. yeah, And Nathan will agree to that because he did yeah, not have a squad. Just look at the bench that we got at the time that he was managing, apart from the last season where he was sacked. Literally, there was Cavani. We all know how fit Martial used to be. You know, everybody knows that. I don't have to get into details. Midfield में मैकफ्रेड के अलावा कौन था? Literally कौन था? एंड द देखो, प्लेयर्स का वो काम ही है भाई. द प्लेयर्स व्हेन दे विल फील कि भाई उनको कोई रिप्लेस करने वाला है, या फिर मैनेजर उनको उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक सेकंड में उनका माइंडसेट चेंज हो जाएगा. तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द yeah, प्लेयर्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टैक्टिकल वाला थिंग. नो मैनेजर कैन बी सेकंड एंड थर्ड विदाउट बीइंग टैक्टिकली गुड. सिंपल. अगर यही वाली बात है भाई, तो यू नो हम उसके बाद से रो ही रहे हैं कि भाई हमारे को ले आओ यार चैंपियंस लीग में, बैक टू बैक ईयर में चैंपियंस लीग यू नो फिनिश करवा दो यार प्लीज, हमारे को 2 साल लगातार चैंपियंस लीग खिलवा दो यार. एंड ही Also, गॉट. हाँ. also to add to your point, Anshuman, a lot of I read someone said a lot of people will say this is because it was an empty stadium, and Sahil is right, by the way. The funny thing is, right? Everyone had an empty stadium, so everyone could have got 27 games unbeaten. You understand what I'm saying? I'm saying everyone, if as far as I remember, everybody played in an empty stadium, not just Manchester United. Exactly.
Someone else could have gone on a 27 beater. We didn't even win the league. We have no excuse. The person above us couldn't do it, you know? Exactly. So that's interesting. Yeah. चलो क्वेश्चन टू आता है ओले वाला टॉपिक चलता रहेगा भाई ओले वाला इज वन टॉपिक वेयर वी विल नेवर run out of Yeah. questions, we will Also, never we run out. love him. We love him, so we can't help it. Yeah. It's a Exactly. thing. And I think even those who question him, I think they love him as a player. Of They can course. definitely, yeah, they can definitely question some of his tactics and some of, Definitely. the things, and that's totally fine. In midfield, who do you guys would like to address the Fernandes Menu gap? Why there is no gap, to be very honest. There is no gap. The thing is, this is a competition created by the manager, which was never a competition in the first place. People need to understand that. Midfield 2, midfield 3 is not even a question right now. What we are talking is one player is playing out of position, and nobody is saying that play Kobbie Mainoo for next 25 games. All we are saying is try that midfield combination for few games and see what happens. Kobbie, Casemiro, Bruno up front. Even if you are not changing the formation, nobody is talking about changing the formation. But if something is not working, मेरे भाई लोग, ठीक है, you need to change. And that's why I made the point earlier. It was very easy to bring a youngster down. It was very easy to go out in the public and just say, oh, Chido is this, Amas is this, and he looked so stupid. He looked so stupid. But when we talk about certain players who are not playing well, he cannot take them out. First, bias. Second, उनका रुतबा जो है ना भाई, वो आमरिम के पूरे करियर से बढ़ा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. सो ही विल व्हेन वी टॉक अबाउट टेकिंग चांसेस, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई आई टॉक अबाउट मेंटालिटी कि चलो प्लेयर्स की मेंटालिटी जो है अभी हटा दो. मैनेजर की मेंटालिटी क्या है? इज ही गोइंग टू विन द गेम्स? इज ही गेटिंग द विंस? नो. यू नो सिंपल सी बात है. वो जीतेगा ना, उसके बाद ईगो दिखाएगा तो सारे लोग बोलेंगे वाह. जोजे एटीट्यूड दिखाता था जीत के. वो बोल सकता था ना पब्लिक में जाके, रेस्पेक्ट मैन, रेस्पेक्ट 3, रेस्पेक्ट, वो बोल सकता था. ठीक है, सिंपल सी बात है. तेंजिन यार, तेरे को नहीं सुनना है मत सुन. ठीक है, तेरे को नहीं सुनना है मत सुन. याप करना बंद होगा. मैं याप करूंगा, मैं मैनेजर की ऐसी तैसी करूंगा. मुझे तेरे से सजेशन नहीं चाहिए मेरे भाई. एंड मैं सीधा सीधा मुंह पे बोल रहा हूं. I don't want your suggestion about me talking about my manager. You want to talk about your manager in a certain way, feel free यार. मैंने तेरे को थोड़ी बोला है कि भाई तू एमरिम आउट बोल. मेरे को ज्ञान नहीं दे रहा भाई. ठीक है, मैं ज्ञान नहीं लेता. अगर नहीं पता है तो आज पता लग जाएगा, और वो पूरे चैट को पता है. They can talk about, they can have debates, they cannot tell me what to do. ठीक है, you like your manager, fair enough. At this point of time, I am not liking certain decisions and I will call him out. You cannot call him out, that's fair enough. I am not telling you to call him out. बट अगर तुम्हारे को लग रहा है कि भाई तुम मेरे को बोल दोगे ये तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो बंद कर दूंगा, तो भाई तुम बहुत ही बाबा आदम के जमाने में जी रहे हो भाई. 4 साल हो गया मेरे को यहाँ पे बैठे हुए, मैंने आज तक किसी से ज्ञान नहीं लिया. नॉट अ सिंगल पर्सन. इफ आई एम रॉन्ग, आई विल डेफिनेटली थैंक हिम कि भाई आई एम रॉन्ग, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी. बट मैं किसी से ज्ञान नहीं लेता यार. ठीक है. Can this conversation go for 4 hours? This is love. we can talk for about Ole. We can talk for hours. ये वाला जो सीन है हरमन भाई, 200,000 this year. I am still trying to find the report कि वहां पे ये कहां पे ये नंबर कोट किया गया है. People come up and people say that 200,000. ठीक है. Where has this has been quoted? अगर मैंने मिस कर दिया, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ हरमन भाई. If I have missed it, please send me the link. If Ornstein has mentioned it, if somebody like Romano has mentioned it, or even Andy Mitten, who knows the whereabouts of the club, has mentioned it, I would love to know. ठीक है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेके प्रॉब्लम है, सबको पता है. But Isn't this the rumor 120 to 150? Isn't that the current rumor? Wheeler, I think Wheeler said 200,000, and उसके बाद everybody went on that bandwagon. But I'm still able to, I'm still not able to see somebody like Andy Mitten, who knows, absolutely knows, even Sully, Sully, who knows things. When we talk about Romano, when we talk about Ornstein, ये सारी चीजें. So I'm still waiting to hear that, see that number flash. Yes, contract problem is there. Everybody knows that, whatever the reason is. But this 200K, I won't take it seriously till I see it from credible sources. That's it.
कोबी रियली इंजर्ड है भाई, वो 1 महीने के लिए है, ही माइट नॉट बी देयर फॉर द ट्रांसफर विंडो। ठीक है, वो ट्रांसफर विंडो में भी अवेलेबल नहीं होगा। ग्रोइन इंजरी है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ही विल बी आउट फॉर 4 to 6 वीक्स जस्ट लाइक ब्रूनो। ठीक है, तो ब्रूनो एंड कोबी आउट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इज जस्ट विनिंग मोर इंपॉर्टेंट देन चेंजिंग कल्चर इवन इफ वी सफर फॉर अ ईयर? प्रणय भाई का क्वेश्चन है, नेथन व्हाट डू यू थिंक? You want the short answer or the long answer? या शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ। Short answer is yes. Long answer is also yes. But the reason the long answer is yes is because the trickle down effect of not having Europe for more and more years is going to be catastrophic to the club. Pranay, I'm telling you right now, people have forgotten because we have spent enough money this season. But for the last 2, 3 years, they were complaining about having less and less money as the years go on. And at some point of time, that is going to come true if we don't finish in Europe. And then people will get even more angry. But the problem is, Pranay, that people have told us already we don't have money. So now we have to understand we don't have money, and we have to understand why winning is important. Strategy, culture, buzzwords, philosophy doesn't matter, because if we don't finish in Europe, mark my words, we will actually spend less money again. We are not going to spend more money. This is not Glazers anymore. The Glazers used to throw money at the problem when we were bad. But the more we finish out of Europe, it's not possible. It's just not possible to do that. Exactly. See, culture will always be needed. Culture should improve. There is absolutely no doubt about that. But you have to win games as well. It cannot be कि भाई कल्चर सुधार रहा है तो भाई 16th आ गए जी। ठीक है, ये इट कैन नॉट हैपन लाइक दैट। ठीक है, तुम कल्चर सुधारने के लिए बचोगे ही नहीं इफ यू कीप ऑन फिनिशिंग 15th and 16th। ठीक है, यू विल बी गॉन, कल्चर विल बी द सेम। सो यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ द थिंग्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। If you cannot do that, and I keep on saying I rate Ruben Amorim very high, but then again he is still, he's still not showing me the things that he basically did well, at Sporting. The things that things that worked at Sporting, he tried here, it's not working out. He's still sticking with it. So at times you need to change it. Okay, you need to There is change it, and there that's is why. there's some Yeah. breaking news. Can I? So I'm so sorry, but I just saw some news. Your friend Chris Wheeler is back at it. Uh, United are set to appoint Newcastle United. I don't know why we are chasing Newcastle's people. हम Paul लग रहा है ना अभी, क्या अभी हम Midgley. लिटरली उसको ना उंगल दे रहे जानबूझ के न्यूकासल को कि साले ये ले। तू जो भी लेके One आएगा। some fans said there's only one United, no, and Ineos took it personally after that. I एग्जैक्टली think Paul Midgley as their, oh, you're going to love this one. Paul Midgley as their new head of youth recruitment. Thoughts, thoughts. देयर इज नो थॉट्स एज आई सेड। यू नो ऐसा नहीं है कि भाई इंग्लैंड के बाहर ढंग के बंदे नहीं है कि तुम ले ही नहीं सकते। ठीक है, जस्ट बिकॉज यू आर इंग्लिश क्लब डज नॉट मीन कि आप बाहर लिटरली जाओ ही नहीं। ठीक है, सो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट, अपार्ट फ्रॉम सीरियसली नेथन लाफिंग एट दैट। लेट्स गेट टू रूबन नेवेस। आई एम अ बिग fan and I would love to have him for like 15 million. What do you think, Nathan? I'm in. I'm 100% in. And the reason is, I think, he's playing for Portugal. I don't know necessarily if he's the starting choice necessarily. But the fact that he's still in the team after being in Portugal for in Saudi Arabia for what, 2+ years now, I feel that his levels haven't dropped to the point where it's noticeable. So I think why not here? And if we are doing the whole Premier League proven route, then let's go get people who are running down their contract, or the Saudi clubs want to offload them for their foreign player quota, whatever works for us. Yeah, why they are getting rid of him, as long as it helps us, who cares? So, Exactly. so I mean, I will take him absolutely, for sure. Exactly. I think chat will also take him. I think Ruben Neves for like 15 million is a no-brainer, man. People forget that he's still 28. Yeah. People need to understand. It's not like his age has, it's just he has played in that league. I can understand. And that's why we are talking about 15 million, not 50 million. Yeah. You know, Now He, let's talk about he this comment. basically he basically is Yeah, like Oscar. They did exactly. what they could, Exactly. and now they're trying to take care of their family, which I personally am okay with. I feel that is fair. As a man, you have to take care of your family as well. Football is going to end at some point of time. So
He's Exactly. strategically doing his career this way. I think it's fair. All right. I will take this comment and I will answer this comment. भाई किसी का स्क्वाड जो है ना 11 वर्ल्ड क्लास प्लेयर के साथ नहीं बना होता, ठीक है। व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस सिटी का 11, ठीक है, मथियस नूनियस वर्ल्ड क्लास है, निको ओराइली वर्ल्ड क्लास है, ही दे आर प्लेइंग लिटरली निको गोंजालेस, इज ही वर्ल्ड क्लास? So not everybody is going to be world class. You need to understand that squad is there for a reason, and I'm not saying कि हमारा squad भाई बिल्कुल ही जाके चैंपियंस लीग जीत लेगा, but when you are not utilizing your squad in a proper way, your squad will look even more pathetic than it is. That's what happened last season as well. When we finished 15, everybody said the squad is so poor, we finished 15th. No, the manager was so poor, and he's still, he's done some things right, but he's still doing a lot of things wrong. And that's why we are seventh. If he would change certain things, I think we can get into the top five. I still say that. Because people around you are playing literally 2 games a week, with whom you are competing for the UCL place next Yeah. season. बेसिकली अगर पैलेस को हटा भी दो यार, पैलेस को अगर नहीं भी लेना है, ठीक है, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट टॉटनम, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट चेल्सी, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट विला, यू आर फाइटिंग, दे आर प्लेइंग 2 games per week. You play 1 week per week, and after 15 minutes you look like you are going to just sleep on the pitch. Yeah. And that has to come from the manager कि भाई उसको improve कर. If this keeps on happening every game, everybody will remember. If somebody is new, and I will tell you guys कि भाई when Robin van Persie joined United, उस टीम का गुंडा हुआ करता था वेन रूनी, ठीक है। सर एलेक्स ने सबको बुलाया और बोला कि बेटा अगर तुमने वैन पर्सी के पैर पे बॉल नहीं गिराई तो तुम्हारे जो बॉल्स है ना उनके साथ कैसे खेलूंगा मैं, वो किसी को नहीं पता, ठीक है। सिंपल सी बात है, मतलब ऐसी धमकी देनी होती है भाई कि इफ यू आर नॉट फीडिंग योर स्ट्राइकर, यू आर नॉट प्लेइंग। इन शॉर्ट, ऑफ कोर्स बॉल्स वाली बात मेरी है, वो सर एलेक्स ने नहीं बोला था। पता चले भाई मेरे को कोट कर दिया कि भाई सर एलेक्स ने तो बोला था, तुम्ही ने तो बोला था उसके बाद भाई मैं गालियां खा रहा हूं फिर, तो वो वाला सीन नहीं, ठीक है। नो बडी इज टॉकिंग अबाउट अ सैक। हर बार क्रिटिसिज्म को अगर सैक समझना है तो आई डोंट नो, ठीक है, देन आई कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर कोई से आप इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करते हो, अगर आप बोल दो सैक 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 मत करो भाई, सैक मत करो, then I cannot do anything. But you have to, when you talk about putting up your philosophy into the team, आपको जब गुंडा ही बनना है तो आपको सबके लिए गुंडा बनना है, आपको किसी के लिए अच्छा किसी के लिए गुंडा नहीं बनना। When you are playing a certain team and you want the team to get along with you 100%, तो सबको लगना चाहिए। अगर 20 है तो 20 को लगना चाहिए कि भाई अगर मैं अच्छा खेलूंगा मेरे को जब मौका मिलेगा, ठीक है भाई। अगर एक एक बंदा बैठा हुआ है तो ऐसा लगेगा कि ठीक है, तो वही वाली बात है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे को वही चीज देखना है कि भाई अगर मैनेजर अच्छा कर रहा है, भाई आई एम द सेम गाय हु कीप्स ऑन सेइंग कि भाई मैनेजर हैज इंप्रूव्ड आवर सेट पीसेस, ठीक है, वो इंप्रूव हुआ है, वो दिखता है, ठीक है। आवर अटैकिंग आउटपुट का पैटर्न हमारे को दिखता है, बट जो चीजें नहीं दिखती है उसको मैं कैसे बोल दूं कि दिख रहा है भाई। तो वही वाली बात है। तो स्क्वाड की क्वालिटी किसी की भी भाई 15 के 15, 20 के 20 बंदे वर्ल्ड क्लास नहीं होते मेरे भाई, बट यू हैव टू नो कि भाई कौन सा स्क्वाड कैसे यूज करना है। एवरीबडी न्यू ना कि भाई एफकॉन में हमारे बंदे जाने वाले हैं। स्टिल द पीपल ऑन द बेंच डिड नॉट गेट अ सिंगल मिनट ऑन द रन टू द एफकॉन गेम्स। मैं उसी स्क्वाड को अच्छे से यूटिलाइज करने की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट फाइटिंग विद एनीबडी कि भाई वो मैनेजर कैसा है नहीं है, वो सब बात की बात है, तो उस चीजों के ऊपर हम आराम से बात कर सकते हैं, और वो चलता रहेगा भाई। किसी दिन वो अच्छा करेगा, किसी दिन नहीं करेगा, एंड नेथन सेड कि भाई इफ यू लूज टू वुल्व्स सैक हिम, एंड दैट वाज इन अ वे कि भाई अगर आप वुल्व्स जैसी टीम से हार रहे हो तो भाई दैट इज अ न्यू लो। वो बंदों के पास लिटरली 2 पॉइंट्स है भाई इन द टेबल। No, no. See, you were there, right? I brought out this. Yeah, I brought out. Should I bless them with the stat? Should I bless them also with the stat I read out, Anshuman, just to get everyone up to speed? definitely. Okay, yeah. So here's the stat, guys. I Before we played Wolves the first time, I will update it. Just before the game, so the update is correct. But just before we played Wolves the first time, I decided to see who are the worst teams in all 5 divisions of the English football ladder.
So at the time, Sheffield Wednesday, shout out to Harry Amas, in the championship has one win in 18 games at the time. Port Vale in League One had three wins in 18 games at the time. Newport County in League Two had three wins in 18 games at that time. And this team, though I've never heard of until I had to Google it, Truro in the National League has three wins in 21 games. Wolves is the only team in the English football ladder that has no wins. And people will say, don't compare the leagues. Wolverhampton Wanderers is pound for pound the worst team in England. In England, not in the Premier League. So I don't feel bad for my statement. And then we won 4-1. And then I was like, this is what we should have done anyway. सी दैट्स व्हाट आई कीप ऑन सेइंग, यू नो, जब आप बोलते हो कि भाई डिफेंस पूरा गू नहीं होता, भाई डिफेंस पूरा गू है भी नहीं, डिफेंस पूरा गू है भी नहीं, बट कोई भी डिफेंस आपका 90 मिनट झेल भी नहीं सकता जब आपका मिडफील्ड जीरो है, तो यू नो दे गेट जीरो सपोर्ट फ्रॉम द मिडफील्ड, यू नो, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि भाई हर चीज अच्छा नहीं है, बट ये स्क्वाड इससे बेटर कर सकता है, यू नो। इफ वी वर प्लेइंग 2 गेम्स पर वीक विद दिस स्क्वाड, मैं एक शब्द नहीं बोलता, यू नो, एक शब्द नहीं बोलता, आई वुड हैव स्टेड एब्सोल्युटली क्वाइट कि भाई तू इस स्क्वाड के साथ 2 गेम हफ्ते के खेल रहा है, क्यूडोस, हैट्स ऑफ टू यू, बट जस्ट लुक एट पैलेस यार, उनका स्क्वाड देखो, एंड दे आर प्लेइंग 2 गेम्स पर वीक, लिटरली दे आर प्लेइंग 2 गेम्स पर वीक, तो और मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, यू नो, हमने थोड़े से अपने स्टैंडर्ड्स नीचे कर लिया भाई, वी विल हैव टू अग्री टू दैट। उसने बोल दिया भाई 15 के नीचे जो भी आएगा वो, यू नो, दैट इज इंप्रूवमेंट, दैट इज नॉट इंप्रूवमेंट। उसने 15 फिनिश कराया है भाई, उसने, ठीक है, एंड देन वी हैव स्पेंड 200 मिलियन, एंड द स्क्वाड दैट ही फिनिश्ड 15th विद, वी स्पेंड 200 मिलियन इन दैट स्क्वाड एज वेल लास्ट समर। तो मजराई कोई खराब प्लेयर नहीं है, डिलीट कोई खराब प्लेयर नहीं है, सो वही वाली चीज है, एंड वी विल हैव टू वेट एंड सी। बाकी कमेंट्स अगर भाई, अगर कोई क्वेश्चन मेरे से आपसे हम लोगों से मिस हो जाए तो आप वापस डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे भैया कैसे हो आप? अरे कौन? अरे नहीं नहीं, आया भी चल रहा है भैया, वो तो मजाक चल रहा है। वी वर टॉकिंग अबाउट सर एलेक्स, वी वर टॉकिंग अबाउट सर एलेक्स। भैया आप कैसे हो ये बताओ। न्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड लाइक लाइप्जिग यान डियो मांडे और लॉट पॉल ओकीफ, ये कौन है पहले संकेत भाई, ये कौन बंदा है? मैं न्यूज बाद में पढ़ूंगा। संकेत भाई मेरे को बस ये बता दो, मेरे को बस ये बता दो कि पॉल ओकीफ कौन है, आई वुड लव टू नो, क्योंकि मुझे पॉल ओकीफ नहीं पता, ठीक है। आई नो यान डियो मांडे, आई नो आरबी लाइप्जिग, आई नो मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये पॉल ओकीफ कौन है? आई वुड लव टू नो, ठीक है। गाइस थोड़े डब्ल्यूज इन द चैट हो जाए फॉर अनीश भाई। अनीश भाई थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। दाई केछा खबर से, अरे नेपाली में भाई अब पूछोगे मेरी खबर तो भाई सब कुछ ठीक छे। तू बतावा कस्तो छे, ठीक है। तो मेरे को इतनी नेपाली आती है और इससे बेटर भी आती है, ठीक है। आई डोंट स्पीक नेपाली दैट मच, बट समझ में मेरे को ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आती है अनीश भाई, एंड आई कैन डेफिनेटली टॉक नॉट फ्लुएंटली बट in a certain way in Nepali, because Nepali is very very, you know, क्या Similar बोल, to Hindi. Similar to no no Hindi. no, very similar to Maithili. Maithili is spoken in Bihar, Bihar. Okay. you know, तो Maithili, Bhojpuri and Nepali, it's very very same, so the dialect Maithili, And and you know, so that is, so thanks a lot for being here, really appreciate that Anish bhai। रिव्यू ऑफ लीचा, लीचा पे बात करेंगे भाई, इन दैट नंबर 6 पोजीशन फॉर श्योर। एंड हरमन भाई बोल रहा है बहुत सारी बात करनी है बट आज टाइम नहीं है, इट्स टोटली फेयर हरमन भाई, टाइम टाइम का ही प्रॉब्लम हो जाता है, एंड आई नो इट्स मॉर्निंग फॉर यू इन कनाडा, तो यू हैव टू वर्क, ठीक है। हमारे तो हम तो यहाँ पे बकैती पेल के सो जाएंगे, बट आपको तो अभी पूरे दिन काम करना है, सो वी विल बी डेफिनेटली, यू नो, यू विल बी हियर एज वेल। मैंने पूछा था आपसे आपका इंस्टा आईडी, if you can contact me on Insta or even on Twitter, you know, we will have like a proper gang together and then we will talk everything in detail, because जितने उस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है भाई, डिस्कशन उतना ही अमेजिंग होता है, ठीक है। वी माइट अग्री टू सर्टेन थिंग्स, वी माइट नॉट अग्री टू सर्टेन थिंग्स, बट मजा उसी में आता है। बट डब्ल्यू इज इन द चैट फॉर विजय भाई इन द हाउस, विजय भाई हैज जॉइंड बैक एज अ मेंबर, विजय भाई थैंक्स अ लॉट।
अच्छा, हरमन भाई बोल रहे हैं 2 वीक्स की हॉलीडे है मेरी। हरमन भाई को टाइम आउट दे दो यार, तो 24 घंटे के लिए। ये ऐसे गांड थोड़ी जलानी होती है हरमन भाई। मतलब मैंने तो बोला कि भाई हम तो बकैती करके सो जाएंगे, आपने तो बस हथौड़ा ही मार दिया हमारे ऊपर। 2 हफ्ते की छुट्टी हमारे को भी दिलवा दो भाई। यार 2 दिन की ना मिल रही, आप 2 हफ्ते की लेके बैठे हो। बट चलो, कुछ क्वेश्चंस, कुछ कुछ क्वेश्चंस थे। डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉसिंग कोबी का पास। भाई एक सेकेंड, एक तो ये इतना लंबा मैसेज है ना, मेरे को पढ़ना पूरा पड़ेगा। मैं मार्क कर लेता हूँ। लता, आई विल मार्क दिस बिकॉज 2-3 चीजें हैं जो यू हैव पुट अप, तो इसको हम आराम से बात करेंगे, ठीक है। सेमेन्यो का क्या लग रहा है मेरे भाई? ये मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर ले, मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है। वी हैव वो टॉक्ड अबाउट सेमेन्यो। वी वांट सेमेन्यो बट नॉट एज अ विंग बैक। बट मैं थोड़ा सा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस चीज को लेके ही थोड़ा घबराया हुआ हूँ कि अगर हम विंग बैक बोलेंगे तो शायद वो कहीं और चला जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन आप कुनिया को बोल दोगे विंग बैक, तो कुनिया बोलेगा साले खिला ले मेरे को, अब तो आ ही चुका हूं मैं टीम में। बट आप जिसको लेके आना चाहते हो, वो क्या विंग बैक खेलना चाहता है, दैट इज माई बिगेस्ट वरी। ठीक है, उसके अलावा मेरा और कोई वरी नहीं है। ठीक है, दैट इज वॉट आई एम सेइंग। नेतन, इफ यू हैव समथिंग टू ऐड अबाउट No, no, I agree. See, the thing is, I know he's going to play him wing back. So whether I want him to play wing back or not is not important. So एग्जैक्टली। और भाई that लोग is the only ये problem. ये हाँ, ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, सॉरी, ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, रेडी टू चेंज देयर सिस्टम। भाई इफ वी आर डूइंग दिस ना, वी आर द बिगेस्ट फूल्स। अगर आप I think all the people that backed Amarim for that last season definitely look एग्जैक्टली bad. They look bad, not trying to insult anyone. They look bad because you believed in him and he duped you. Because he kept saying, I will not change no matter what. He एग्जैक्टली didn't want to change. This is all he's doing. And that is what, no, Anshuman, I feel really bad for all the people who are like, no matter what, we are going to give him a chance. There's nothing wrong with your opinion. That is fine. But the thing is, this manager should give them reason to believe that, because they are being so hopeful, that he is going to change our fortune. And if this is even remotely true, it's going to be incredibly disappointing for those fans, because those fans were listening to him, believing everything he's going to say, and now they have nothing to stand on. Because he could have done this last year, and we would have saved ourselves a lot of embarrassment, a lot. एग्जैक्टली। द वे वी लॉस्ट गेम्स, द वे वी प्लेड सर्टेन प्लेयर्स इन दोस पोजीशंस, वी लुक लाइक क्लाउन्स। ठीक है, लास्ट सीजन जस्ट इमेजिन, वी गेव अप ऑन लास्ट सीजन इन फकिंग नवंबर। Fucking November, not relegation threatened teams give up on their season in fucking November. We gave on our season in fucking November. क्रिस व्हीलर को बोलने दो भाई, ठीक है। क्रिस क्रिस व्हीलर के साथ से मेन्यू नहीं गया है खाना खाने। ठीक है, क्रिस व्हीलर किसी दिन मेरे को मिल जाएगा तो पिछवाड़े पे 4 लात मारूंगा सौरभ। ठीक है, इंडिया में मिलना चाहिए बस। ठीक है, उधर साला केस कर देगा तो मेरे को पकड़ लेंगे, इधर पेल भी दूंगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इनकी बातें सुना मत करो यार। ठीक है, सिंपल सी बात है। इफ मिडिल सेज दैट, take Mitten seriously. ठीक है, if Romano, Ornstein, these guys, Sully says that, take them seriously. Even if honestly, Yeah, at least this season, even if Ben Jacob says it, at least be concerned. At least be concerned, because he's had a good season this year, in fairness to him. Yeah, I would be, if exactly. Ben Jacob says, this could be a real thing that's happening, I'd be concerned. भाई ऑनस्टीन का तो उसका बॉम्ब आया है ना यार, चेल्सी वाला, या उसके बाद भी कोई बॉम्ब आया है? लेट मी चेक। Why is Rasmus trending on Twitter? Interesting. बिकॉज ही पोस्टेड आफ्टर विनिंग द ट्रॉफी मेड द राइट डिसीजन, और मेरे को इतना अच्छा लगा ना उसने पोस्ट किया तो मैं You बोला know ले। why, right? You must have hated that. Did you see the interview where he basically admitted that he's bad at math management? His reasoning was incredible. I had to let Rasmus go because how can I tell him he's playing behind Benjamin हाँ Sesko? हाँ, वो सुना मैंने, वो And सुना and I मैंने। I was like, wait a minute. Every team in the league has two strikers, and we have a Xerxes, and you're telling me that you couldn't tell Rasmus Højlund, इमेजिन who wanted इमेजिन to fight for his place, imagine one thing. Imagine one thing. Rasmus Holland wanted to stay. wanted to stay. He said, okay, Sesko is playing as a first choice, not a problem. Yeah. Not a problem. I will fight for my place. Did he not go to Grimsby Town game? Wasn't he there sitting there? Yeah, yeah. He was sitting in all the games. Still he was basically, you know, just I all love of a I sudden. love him, yeah. I love him. I hope he Yeah, does I well. also love him. I also love him. That's what I'm saying. I have a some Holland Respect. scarf.
Yeah. No, no, I have a Haaland scarf. Really? Yeah, I have a Haaland Wow. scarf. Okay. On that point, I also have a Ruben Amorim scarf, but let the let the tenure judge me. But वही है, as कनव भाई said as well, रासमस को भाई जर्गजी की जगह इजीली रख सकते थे, प्रॉपर स्ट्राइक। भाई यहाँ जर्गजी के पास बॉल जाती है, जर्गजी बोलता है ले बहन की लोड़े वापस ले बॉल। हाँ? वो And भाई, one thing I have to say, I'm so sorry. I keep cutting you off. Sorry, no, no, but no, it's totally fine. the you know what my issue was? His first goal was Spinazzola giving him room to run. Now, Anshuman, I am 100% sure you have seen the highlights. I know we shouldn't do it. I know we shouldn't do it because it almost lets us down before we buy a player. But everything I saw about Rasmus and whatever nonsense tacticos that they try to convince me he's going to work said was his off the shoulder running, breaking the line, and he likes to run into space, right? Now you tell me, I saw that Spinazzola goal. His first goal, they did that. His last goal in the semi-final of the Super Cup a couple of days ago, they did it again. Spinazzola only. And I'm thinking to myself, no, wait. So we have seen that highlights. We know what we have been told. Spinazzola just met Rasmus, gives him his debut goal on his first or second match. But we couldn't do that for Rasmus and then deem Rasmus shit. And the best part is, Ronaldo, 16 goals was his best season when he came back. Hoyland at 20 years old leading the line, which no one in the top five leagues, irrespective of what team they are, have a 20-year-old leading the lineup in their attack. 20-year-old. He also got 16 goals. But he is the problem. Bad touch. Bro, Sheshko's touch is just as bad. And he's played Champions League football. At least this Bechara no can say I played in Denmark. नहीं यार, ये एक चीज है, रैशनल से शिट, कम ऑन गाइस, भाई यू वेयर द वन हु वेयर वैंकिंग फॉर यू नो ओसिमन, weren't you? Bro, Sayantan, Shayantan, why, even if 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 let's keep it real. Shayantan, why you wanted Osimhen, and Osimhen played in what, La Liga or what? Just a question. You bro, said CDI shit. I'm not even going with Rasmus' shit. but Okay, but you said but CDI shit. Sayantan, here's the best part. He equaled Ronaldo's best tally, and he's not nowhere near as good as Ronaldo at 40. It is Exactly. that difficult to be a striker in a club. Sheshko is going to get nowhere near 16 goals. He will factually be a worse player than Rasmus Hoyland, and we paid more for him. This is not a dig at Hoyland or Sheshko. This is a dig at Amarim saying he cannot manage on live on TV, and yet everyone says he's a good manager. How you tell me, Sayantan, is Rasmus not better than Xerxes because Xerxes is still in our club? You tell me, no, forget you think Rasmus is shit. No, shall I'll take it. I agree. Let's say even I agree with you. But you can't tell me he's worse than Xerxes. Xerxes is in our club still. भाई जो लोग बोल रहे रैसमस इज 30 इन यूनाइटेड, भाई तुमने यूनाइटेड देखा ही नहीं है भाई। If you 16 are judging, goals, bro. why You know how he difficult scored that is. 16 goals in his debut season at the age of 20. Okay, let's get to the next season. You are saying he was shit because of the last season because we finished 15th. Who was good, bhai? Who Everybody was was bad. who was good in this team? Please tell me. Tell me apart from Bruno, who was actually doing anything of decency in that team. The next Please best, tell the me. next best person is at Chelsea. Funny enough, I know no one wants to say his name, so we won't say his name. But he's Yeah. currently at Chelsea. That's मैं the वही next बोल रहा हूँ best भाई। in GA. Yeah, GA, but he was the most rubbish player on the pitch, भाई। No, no, उसने he was the most rubbish. But you're saying in yeah, terms, we are talking about goals, now 16, contribution. The yeah, next best contributor is in Chelsea. He's not even here anymore. But we have exactly, Xerxes. We have Xerxes here. So exactly. it's tough, yeah. It's tough. रैशफोर्ड को ला सकते हैं विंटर में, नहीं भाई, विंटर में रैसमस नहीं No, आएगा। he's not going to अनिश come भाई, back. थैंक्स अलॉट फॉर द सपोर्ट एज वेल, रियली अप्रिशिएट। भाई नेथन भाई को आप खुद ही हाय बोल दो भाई, नेथन भाई यहीं बैठे हैं, थर्ड पार्टी के थ्रू जाने का कोई वो नहीं है। यू Love to कैन जस्ट से Nepal. Love to Nepal. Hopefully, I भाई, can go one day. भाई यू शुड गो, यू शुड डेफिनेटली गो, एंड इफ I यू कैन love the ऑलवेज, snow, yaar. I'm looking forward to it. भाई आई, इट्स लाइक माय ईयरली ट्रिप, नेपाल इज लाइक Yeah, माय ईयरली ट्रिप, you know so you are not active on Insta, that's why, yeah. otherwise you would have No, known but as well. I saw the picture. No, I think you posted it on your YouTube. Yeah, What is it called? The note. What is it called? Community post. community I post, saw it. yeah, Yeah. yeah.
Yeah. Pratik Bhaiya, 16 months as a member. Really, really appreciate it. भाई ये these are the guys who keep the channel going. I keep on saying, you know, I always say super chats and memberships, it's all on you guys. वो आपके ऊपर है भाई, because that's your hard money. You know, I'm not going to say कि भाई आपको करना ही करना है and all that, but the way you guys support, I really, really appreciate that. Rasmus won't come again. भाई Rasmus won't come because उसको लाके करोगे क्या? अब लाके क्या करोगे? You know, when I said कि भाई हमारे को स्ट्राइकर नहीं चाहिए, आई सेड दैट इन द समर विंडो, तो यहाँ पे लोगों ने मेरे को धमाके से भाई पेल दिया पकड़ के कि भाई तेको रासमस हॉयलैंड पसंद है, इस वजह से यू डोंट वांट अ स्ट्राइकर। जर्सी के पीछे तो भाई बहुत लोगों ने हिला लिया था यहाँ पे। लेट्स बी Your ऑनेस्ट। life ops is saying सॉरी सॉरी, Xerxes was king in Serie A. या No, if Xerxes was king in Serie A, believe me, Rasmus is going to crush him this season. या He's going to crush him. I don't know भाई, what I don't know what he did at Bologna before we bought him. He's going to crush him this season. भाई बोलोनिया में हिज रोल वाज डिफरेंट, यू नो, एंड They're व्हेन different. ही, एंड यहाँ पे भी उसका रोल डिफरेंट है। ही इज नॉट अ स्ट्राइकर, Yeah, ही इज नॉट इवन अ बैकअप स्ट्राइकर। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, यू नो, कि भाई हम हॉलैंड का डिफिनिज्म कर रहे हैं, उसको भी बहुत इंप्रूव करना था भाई, yeah. उसको बहुत इंप्रूव करना था। He's वी आर 20 years old. Yeah, he has to yeah, improve. He has yeah. they has to have improve more. He can't be the finished article. It's not possible. Nobody is saying कि Sesko is going to fail भाई। All I am saying is कि We were talking कुनिया, about Ruben Amorim. या एंड कुनिया और क्या बोलते हैं एम्बुमो अमाद के साथ हॉयलैंड इस सीजन 15 गोल से ऊपर मारता, मैं गारंटी के साथ बोलता। Oh, 100%. 15 के ऊपर मारता भाई वो, ठीक है भाई। मैं रासमस पगलू नहीं हूं, मैं यूनाइटेड पगलू हूं, I don't think Anshuman has defended Rasmus to that point. At least not from ठीक है। what I मैं watched. भाई, मैं सिर्फ यूनाइटेड पगलू हूं, Yeah. ठीक है, बट मैं लॉजिकली यूनाइटेड पगलू हूं, और लॉजिकली मैं प्लेयर्स को डिफेंड करता हूं, ठीक है। ये नहीं है कि बस 2 मैचेस में गोल नहीं मारा तो वैंड वैगन चला दिया, प्लेयर आउट, प्लेयर इज शिट, प्लेयर इज फलाना, प्लेयर इज धमकाना। हम्म? I वो नहीं। think you know what, life ops. I'll be honest, it's not about Xerxes. It's about man management. And second of all, you have to take in account he was young. Yeah. Today we are saying Lenny Yoro's 19, give him time. So why we did not give Rasmus Højlund at 21 the same benefit? You can't tell me 19 and 21 is a big difference. You can't, especially if you're not going to play every game. You cannot tell me that. So that is what we are not defending Hoyland. We are just looking at it logically. Here, Spinazzola has not played one game with him on debut. He gives him the goal that we saw highlights of. That is his specialty, running behind the line, give him space, put it on his left side. He literally got his debut goal that way. And 2 days ago in the semi-final, Spinazzola did the same thing. So why couldn't we do the same thing for him? That's all the question. Here we are asking him to wrestle. I know everyone made like jokes here. This guy was trying to wrestle with him and all that. I get it. But he's asked him to do that. That does not make it his specialty. Like now here we all sit and complain. No, Bruno, you're not letting him play in his specialty. It's the same thing for Rasmus. No, Rasmus' specialty is not to hold off the ball. It is to run in space. Now, I'm not saying I am not. Then people will say, Ruben, it's Ruben Amorim's team. You have to play how he wants. But then you have to realize you're not playing against their strength. No, they will obviously be compromised. No, एग्जैक्टली भाई, लोग जिन लोगों ने अभी तक चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया, नेथन का वो कर लो यार। एज yeah, आई सेड, आई एम, Tathagata is saying the agendas already start against Lenny. Oh, exactly. He's also 20 years old. Yeah, what we are मैं वही waiting बोल for रहा हूँ, him also. मैं वही एग्जैक्टली, हर हर 18-19 साल के बंदों को बेचोगे तो भाई तुम खेलोगे किसके साथ? कॉन्टे जैसी टीम बना दे, 35-35 साल के लौंडे लिए हैं, बताओ। यू नो, Tough. कॉन्टे की जैसी टीम बनानी है तो बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टॉक अबाउट प्रोसेस, ठीक है, एंड देन यू टॉक अबाउट कि भाई सारे 18-19 साल के बंदे भेज दो। हम्म? ठीक है, तो वो चीज आपको देखना पड़ेगा ना भाई, वो चीज आपको देखना पड़ेगा। Life Ops is saying we are overhyping him. Life Ops, trust अरे me, we are भाई, not. We are not overhyping him. We brought up the Rasmus thing because Ruben Amorim said he cannot manage with two strikers. एग्जैक्टली, This is nobody what is, this is. No one is saying Xerxes is bad, Sheshko is या bad, Hoyland is. We are not talking about that. We एग्जैक्टली, initially talked about the fact that Ruben Amorim basically said, "I can't tell Hoyland to sit on the bench, even though Hoyland wants to sit on the bench वांटेड and टू fight for सिट a ऑन द spot." बेंच, एग्जैक्टली, That's what we are saying. We are not agreeing with एग्जैक्टली। you or disagreeing with you. We were talking about something भाई completely वी different. डोंट डू डिविनिज्म यार। आपने हमारे को देखा है बैठ के स्कॉट मैकटोमिने के बारे में बात करते हुए? वी डोंट डू दैट। Yeah. यू नो, जो चले गए सो चले गए भाई। Yeah. ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि वो बेटर ऑप्शन हो सकता था, Yeah. और जो लोग Now बोल रहे we हैं कि have भाई, no option.
या जो लोग बोल रहे हैं कि भाई सर्कसी 24 का है, रासमस 22 का है, मैनेजर ने कुछ तो देखा होगा कि उसको रोका, तो भाई मैनेजर ने कुछ देखा है तो खिला क्यों नहीं रहा फिर? Exactly, life ops. This is the other problem. Now, या I believe you said earlier that he might rate Xerxes more. The या problem with that is you could be right, but the problem is not, we are not seeing it on the pitch. That is एग्जैक्टली। what's worse. और Yeah. एक मिडफील्डर, एक विंग बैक लाना चाहिए विंटर मार्केट में। भाई मेरे विंग बैक के में तो हम वही है, सेमेनियो के पीछे दुम दबा के घूम रहे हैं। अब देखो अब सेमेनियो हमारे को चूज करता है या नहीं करता है। अगर वो आएगा मेरे हिसाब से विंग बैक ही खेलेगा। सो दैट इज आवर विंग बैक चॉइस, मतलब मैनेजर का विंग बैक चॉइस, क्लब का विंग बैक चॉइस, नॉट द फैंस विंग बैक चॉइस। ठीक है। मिडफील्डर में हम रूबन नेवेस की तरफ देख रहे हैं। दैट कैन बी अ वेरी वेरी इजी डील, जितना जल्दी, ठीक है, जितना जल्दी अगर वो हो जाए तो उतना मजा आ जाए भाई। ठीक है। क्रैकर भाई आई नो, थैंक यू, ये कमेंट मैंने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आई कैन आई सॉ दैट कमेंट। मैं सारे कमेंट्स नहीं ले सकता, इस वजह से आई लेट थ्रू दैट गेम। जिजॉक्जी का हेड गेम अच्छा है। आमिर का कौन से हेड गेम की बात कर रहे हो भाई? भाई प्लीज क्लैरिफाई, हेड मतलब हेड गेम जो तुमने बोला है वो कुछ और ही मीनिंग कर रहा है यहाँ पे। अगर And ये वाला, अगर Subo ये is वाला saying गेम you said उसका, Sheshko's touch is bad. Subo, this is in comparison to Rasmus Hoyland. I think Sheshko's touch is not good. I'm not saying it's not about who's bad or better. I think Sheshko does fumble the ball. He gets a little nervous. Go back and watch the Liverpool game when we were leading towards the end of the game. He was the furthest man forward. His pass is not great, no, and he was getting nervous on the ball. You can go see it for yourself. I'm not picking on anyone, Subo. I am just giving the example of what Ruben Amram said in the in his interview about why Rasmus is not part of the team. That's it. It's not about pushing anyone under the train or throwing anyone under the bus. I am just telling you एग्जैक्टली, what about man management. That's it. he and Garnacho have disrespected us. How is Hoyland disrespected you, Why, dude? please tell us, when did Holland disrespected us? Hoyland wanted to stay, dude. We basically kicked him No, no, out. no, I would, no, I कहाँ disrespect किया? I would love to know। ठीक है, I would love to know। ठीक है, Okay, fine, fair enough. Fair. It's I his would love opinion. to know। नो नो, आई वुड लव टू नो कि भाई आपने बोला डिसरेस्पेक्ट, तो डिसरेस्पेक्ट कुछ तो किया होगा ना, कुछ बोला होगा। एंड आई वुड लव टू नो दैट, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। आई एम नॉट सेइंग कि भाई नहीं किया है, मे बी वी वुड हैव मिस्ड इट। ठीक है, Maybe. होता है यार, वी आर ह्यूमंस एज वेल। सो आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू कि भाई हमने क्या मिस करा है कि उसने कब डिसरेस्पेक्ट किया। यू सेड रैशफोर्ड गेट द हिट, वी ऑल नो हाउ मच रैशफोर्ड डिसरेस्पेक्टेड अस। Rashford has done it to multiple managers ठीक even. है, He's not in a मल्टीपल मैनेजर्स। pass. ठीक है, बट आई वुड लव टू नो कि हॉयलैंड ने क्या किया। एज आई सेड, आई वुड हैव, आई मस्ट हैव मिस्ड इट, नेथन मस्ट हैव मिस्ड इट। तो आप बताओ मुझे। ठीक है, सीरिया इज बेटर लीग देन ला लीगा, रोमा, नेपली, यूवेंटस, एसी मिलान। भाई बेटर मैं नहीं बोलूंगा, वर्स मैं नहीं बोलूंगा, आई एम सेइंग कॉम्पिटिटिव लीग है। ठीक है, ये कोई फ्रेंच लीग नहीं है। देयर फोर फाइव टीम्स आर फाइटिंग फॉर द सुडेटो। ठीक है, 4-5 टीम्स आर फाइटिंग फॉर द सुडेटो, एंड दैट शोज द लेवल ऑफ द लीग। ठीक है, दैट शोज द लेवल ऑफ द लीग। यस, आप बोल सकते हो उतने बहुत बड़े बड़े नाम जिस तरीके से पहले 2002 में, 3 में, 5 में, 7 में हुआ करते थे, नहीं है। बट देन अगेन द लीग इज वेरी कॉम्पिटिटिव। Yeah. ठीक है, ये कोई एरिडिविजे नहीं है, ये बुंडेस लीगा नहीं है कि एक ही टीम, एक ही टीम, एक ही टीम। ठीक है, ठीक है, मेड अ ग्रेट डिसीजन, क्यों नहीं बोलेगा भाई, क्यों नहीं बोलेगा? इज नॉट अ यूनाइटेड प्लेयर। अगर आप लोगों को नहीं पता, इज नॉट अ यूनाइटेड प्लेयर एनीमोर। ठीक है, वो ऑब्लिगेशन टू बाई पे गया है मेरे भाई, ऑब्लिगेशन टू बाई, वो नहीं आ रहा वापस। और उसके पास और क्लब्स का ऑफर था, एंड ही वेंट टू नेपोली, एंड दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि ही मेड अ गुड डिसीजन। पूरा कॉन्टेक्स्ट ले लो। पहली बात, वो आ नहीं रहा। दूसरी बात, ये उसका डिसीजन था नेपोली जाने का, वो कहीं और भी जा सकता था। ठीक है, और वो चाहता तो यहाँ पे मैनेजर के विश के अगेंस्ट रुक भी सकता था। क्या कर लेते भाई आप वो फ्री में बैठ के पैसा लेता, तुम कुछ नहीं उखाड़ Like पाते। like a, like a certain person tried to do एग्जैक्टली, this season even. You know. एग्जैक्टली, वो आप कुछ नहीं उखाड़ पाते उसका, बिकॉज ही इज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। उसने बोल दिया मेरे को नहीं जाना है। ठीक है, तुमने उसको टीम से बाहर कर दिया। ठीक है, वो बैठ के पैसे ले रहा है। ठीक, तो वही चीज बोल रहा हूं, काम करे अपना, काम ही कर रहा है भाई, ट्रॉफी जिता दी उसने, वो काम ही कर रहा है अपना। हम कब जीतेंगे नहीं पता, उसने जिता दिया उधर। ठीक है, सो हमारे को अपना काम करना है। उसने अपना काम करा, उसके बाद बोला वी हैव मेड अ राइट डिसीजन। अगर मैं यहाँ पे एक सर्टेन चीज अचीव करता हूं, उसके बाद मैं बोलूंगा ना यार कि आई हैव मेड दिस प्रोग्रेस इन लाइफ। ठीक है, मैं ये चीज बोल सकता हूँ ना कि आई हैव मेड प्रोग्रेस इन लाइफ। मैं बिना कुछ प्रोग्रेस करे नहीं बोल सकता ना आई हैव मेड प्रोग्रेस इन लाइफ।
तो वो वाली चीज़ है। सेस्को वाज साइंड बिकॉज़ उसका ऑफ द बॉल रन अच्छा है। भाई वही वाली बात है ना, अगर आप हर चीज़ बना-बनाया ही लाओगे क्योंकि एक का ऑफ द बॉल अच्छा है, एक का ऑन द बॉल अच्छा है, तो भाई फिर मैनेजर कर क्या रहा है? 1 साल में एक ढंग का प्लेयर उसने इंप्रूव नहीं करा है। एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू आल्सो सी कि भाई वो किस लेवल पे इंप्रूव करता है। स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो इन द सीजन। ठीक Yeah. है? वो चीज़ देखना है। अनीश भाई थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर एज़ अ मेंबर फॉर 4 मंथ्स। आई रियली अप्रिशिएट दैट। मैं यूके के क्रिएटर्स की बात नहीं करता मेरे भाई। ठीक है? आई डोंट टॉक अबाउट यूके के क्रिएटर्स। उनका अपना एजेंडा है, उनकी अपनी, ठीक है? उनको जो चलाना है चलाने दो। आई एम नॉट हियर टू कम्पीट विथ एनीबॉडी। ठीक है? सो आई एम मोर देन हैप्पी जिस तरीके से चल रहा है। कमेंट मिस नहीं किया भाई, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सब्र करो। ठीक है? सेस्को नहीं भाई, सेमेनियो सेमेनियो शशि भाई किसके पास जाएगा? सॉरी शान भाई, वी डोंट नो किसके पास जाएगा। सिटी भी है, लिवरपूल भी है एंड चेल्सी भी है। चेल्सी भी है। सो वी आर फाइटिंग थ्री टीम्स। सो कहाँ गया है अभी नहीं पता, वी विल हैव टू वेट। गौरव भाई आप बताओ कौन से टॉपिक पे बात करें? वी हैव कवर्ड नेवेस, वी हैव कवर्ड सेमेनियो। Semenyo. इंजरी इंजरी की बात भी हमने कर ली है बिकॉज एक एक डेढ़ डेढ़ महीने के लिए, ठीक है, दोनों, ब्रूनो एज वेल एज कोबी दे आर आउट। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर आउट। आपका क्या बोलते हैं, मगवायर और डिलीट वापस कब आएंगे? ठीक है, वो हमारे को देखना पड़ेगा। ठीक है, वांटेड टू सी प्रोग्रेस क्लियरली सेइंग इट, आई नो इट इज नॉट इनफ। भाई देखो, नो, यू कैन स्टार्ट विद दैट नेतन। See, you know what, Hitesh, at the beginning, no, this is the first year in 4 years of doing this that I was posting reactions to the games. The initial games, no, I thought, man, I don't like this formation, but the formation is at least making us look good defensively. And as the games added on, it seemed like our defense started getting really bad. So I maybe when you say like progress in playing style, if you can expand on that just a little bit, the things you like that you're seeing, the things that I like that I'm seeing, we are putting in crosses more this season. Unfortunately, we are not doing it when our tall strikers on the pitch, but at least we are putting crosses in this season, I would say. That I like. The other thing I like is our defensive set pieces are still bad, but our offensive set pieces have gotten significantly better. But I don't know who you can credit that to. And I know now people will say you're not giving Amram any credit. Just hear me out, Ritesh. If I remember correctly, Eric Ten Hag hired a new free kick coach. I believe Ole Gunnar Solskjaer hired a set piece coach as well. So I don't know who our set piece coach is. I'm sure one of you brilliant people in the chat will know who is what his name is. So I don't know who to give that credit to. You can give that to the free kick coach. You could give it to Amram. You could give it to both. It's fine. You give it to whoever you want. But we have improved there. There is no doubt about it. We have bought smart signings this season. We have not thrown money at our problem. We have used release clauses and pressure to try and negotiate a way to get players. We have bought a smart young keeper. Um, we are trying our best with the players we have. Herman said we have a paper thin squad. I like to kindly disagree simply because we could have used our money more smartly. Only that एग्जैक्टली, way I disagree. I'm not saying we don't have a एग्जैक्टली, paper thin squad. I'm saying we could have used our money differently. We bought too many 100%। tens. We have too many tens. We have now. I don't know if anyone saw my latest shot, but I did a reaction. I don't know. I'm sure Anshuman knows this. We are looking at the left back at Sheffield Wednesday while giving our left wing back to Sheffield Wednesday, who's their current player of the month. Makes no sense to me personally at all. That too, on top of Leon, Malasia, and Dogu, we have 5 left wing backs, 0 right wing backs outside of Dallo, because Dallo is our current left wing back. So for me, we are still, some are smart by, some are same old usual. If you can expand a little bit on the exact playing style you like, I'd be interested. I feel like we are passing the ball a little bit more. We are moving forward. We are trying to press a little better from the front, especially when Mason Mount plays. I don't know if people have, Mason Mount has been, when he's fit, I think we look a lot better because he starts pressing from the front. He just puts pressure. He's relentless. People say he's injury prone, injury prone. I see why he's injury prone. He throws himself at everything, full speed. I love that because he's like, bro, I have one life. If I get injured and I have to retire, injure and retire. I cannot.
I cannot keep sugarcoating my life like this. No, I cannot take it easy. I'm going. If I'm going, I'm going. But I'm going. So these are the little things I like. I like the Embuemo Cunha partnership is slowly gelling. The Embuemo Amar partnership slowly gelling whenever he decides to play him back at wing back, obviously. So these little things, like you said, they are little, but they're not enough. If these are the things you're talking about, then yes, we have improved a little bit for sure. You can't take that away from anyone, whoever you want to give credit to. That is my बिल्कुल Carlos लीचर्स Fernandez is the set piece coach. Thank you, Debashish. यस Thank कार्लोस you. फर्नांडिस मकबेल का ट्वीट भाई वही है जो ऑलरेडी सारे लोग बोल चुके हैं दैट इज कि ही विल मेक अ स्विफ्ट डिसीजन ही इज नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम द डिसीजन जो है जो रोमानो ने बोला ठीक है वो बहुत जल्दी आ जाएगा यूनाइटेड पीपल्स टीवी बढ़िया है भाई आई लव सैम ठीक है दैट्स द ओनली क्रिएटर यू कैन से बेसिकली दैट आई वॉच प्रॉपरली लीचा सिक्स भाई देखो टू स्मॉल ऑफ अ सैम्पल साइज बट वन थिंग दैट आई विल से एंड आई ऑलरेडी सेड इट लीचा एट सिक्स he will defend. He won't press. He won't Drop move back. your game forward. Yes, line breaking passes at times he will do that, but majority of the times he will be defending that. ठीक है तो लीचा सिक्स नहीं खिलाना भाई ऑफ कोर्स पिछले मैच में खिला लिया बिकॉज देयर वाज एब्सोल्युटली नो ऑप्शन अगले मैच में उगारते और कैसेमिरो साथ में खिला दो स्टार्ट लीचा एज अ बिकॉज यू विल नीड यू विल नीड सम फिजिकलिटी अगेंस्ट दैट थ्री मैन मिडफील्ड अगर आप सिस्टम चेंज नहीं कर रहे हो तो I'm ठीक sorry, है yaar. When I hear the word Zugate, no, I instantly cringe. भाई देखो आई विल ऑलवेज से अगर कोई बंदा जो पिछले जो सेम मैनेजर के अंदर काफी अच्छा सेम सिस्टम में खेल रहा था इफ इज नॉट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस एंड इफ मैनेजर सेज कि अरे भाई तेरा तो लेवल गिर गया अरे तो भैंस की आंख उठाएगा कौन हाँ? मतलब तू है किस बात का मैनेजर फिर हाँ? जब देखो तो भाई तेरा लेवल गिर गया है ठीक है ये अच्छा नहीं कर रहा है अरे भाई तो तू क्या कर रहा है कंचे खेलने बैठा है क्या वहां पे And it's कैरिंगटन में really I said this on so many streams now, but it's really disappointing because he's the one who got the built him to the point where PSG came in for 60 million, एग्जैक्टली and now two एग्जैक्टली years later he does not know what to do with it, which is really it's really sad to be honest. But एग्जैक्टली भाई उगाड़ते मैं इसलिए बोल रहा हूँ हॉर्सेस फॉर कोर्सेस ठीक है आपको आपको कच्चा कुत्ता बना देगी मिडफील्ड के अंदर ठीक है न्यूकासल ओल्ड ट्रैफर्ड पे ठीक है और डकार भी नहीं मारेगी तो उस वजह से बोल रहा हूँ कि उगाड़ते को पता होगा कि भाई उसको एक ही काम करना है ठीक है बॉल बस खींच 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 बस ठीक है और उसके चक्कर में थोड़ा सा अटैकिंग गेम खेल पाएगा पीछे से लॉन्ग बॉल्स वगैरह डायगोनल्स मार पाएगा क्या बोलते हैं आपका कासामिरो ठीक है ठीक है भाई वी विल क्रिएट नथिंग भाई वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनीथिंग विदाउट ब्रूनो they're एनीवे not going to या create anything. हरमन भाई वही चीज बोल रहा हूँ यू नो वही चीज बोल रहा हूँ वो दोनों ही नहीं क्रिएट करने वाले आप लीचा को भी खिला लोगे तो लीचा भी कौन सा क्रिएट करेगा ठीक है कोबी थोड़ा बहुत कर सकता था बट वही वाली बात है उस तरीके से हमने देखा भी नहीं है और कोबी अब है भी नहीं हाउ लॉन्ग कोबी एंड ब्रूनो आर आउट फॉर अविराज भाई ऑलमोस्ट अ मंथ ठीक है Someone, I think I read a report, I forgot who it was, maybe Mail, said that it's not as bad as we once thought for the Bruno injury. Listen, yeah, या Bruno Fernandez is a cyborg. I know he's going to come back before the month. एग्जैक्टली I have that much confidence in him at least. मैं देखो रश नहीं करना है सिंपल सी बात है आई एम नॉट गोइंग टू रश इट एंड यूनाइटेड शुड नॉट रश इट ठीक है कैन वी ट्राई मजराई नंबर सिक्स व्हाट डू यू थिंक Absolutely not, Pranjay. Absolutely. I rather have Lisandro Martinez, and I'll tell you why. I don't think Mazraoui is as tenacious. You need tenacious people in the middle of the pitch. At least Lisandro Martinez is tenacious. Yeah, he's 5'6". Whatever short jokes people want to make, that's fine. But tenacity and aggression is a must here, and we need it, and we need it in the middle. Mazraoui, God bless him, he's very finesse. He's very gliding. On his day, he's very calm and controlled and all. He is not what I would call naturally aggressive. So, and one more thing about Lisandro on the six. It might be little different to Anshuman, but I absolutely loved it. The fact that he, with his left foot in particular, the fact that he was just trying to push the ball forward, even if there were no See, that's what options, I'm saying, Nathan. flight That it he over, will flight try, it over. Yeah, against Newcastle. We will need that from the back. yeah, That's what I'm trying to say. yeah, Because I am not going to play this defense without Licha against Newcastle. That's my point. yeah. ठीक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग आई एम नॉट सेइंग कि भाई उगाड़ते से अच्छा नहीं खेलेगा वो
Bro, At this point of time, everybody is better than Ugarte. ठीक है, at this point, I would literally put everybody that's on the bench and in see, the team you know instead that's of. what I'm saying. Right now, everybody can play better than Ugarte because of his form, because of his confidence, जो भी है. My point is, आप लीचा को डिफेंस में डालोगे against Newcastle. We don't know whether Maguire and they are going to be back. Why are we not discussing about midfielder? Bhai, we have already discussed a midfielder. Also Yeah, life no also life ops. I hate to say this, but it doesn't the midfielder buzz outside of Ruben Neves doesn't seem to exist at the moment. exactly, exactly. So it's really difficult to discuss about something that is not as concrete because we are then it is just we are hypothesizing. We are just guessing here. We don't really know. See, the thing with the thing we know about Ruben Neves is also that their club either wants to renew his contract or him go so the quota can be replaced by someone No, else, no, no. They want to right? renew him. He said, "I am Renews not going to contract, renew." yeah. Yeah. So he basically there is some contract issue. That's why we are even talking about Ruben Neves. Otherwise, I don't think we have anything to talk about honestly. And only Semenyo, which, like you said, great point. Shit in the midfield. Why are we talking about Semenyo? Absolutely right. एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली भाई, जो जो चीज़ें पॉइंट ऑफ उस तरीके से है वो रहेगा ही. ठीक है, माउंट को ही पीछे खिला लो तो फिर भाई आप आगे विंगर किसको खिलाओगे? नाउ दैट ब्रूनो फर्नांडिस इज गॉन, No, तो best is आप saying Zugarte se better kar lega. Bro, everybody will play better एवरीबडी than विल, him. बट फिर वही वाली Everybody will बात है play ना. better. बट फिर वहां पे कौन खेलेगा मेरे भाई? फिर यू डोंट हैव अ राइट नंबर 10. Yeah. फिर यू डोंट हैव अ राइट नंबर 10. Uh, वही वही oh, चीज बोल as रहा a हूँ club, why we are not thinking? They don't want to भाई. वी spend आर money. Life थिंकिंग. ops. No, no. As a club, they don't want to spend money like that. Life ops. It's या very simple. The moment you tell them 50 million, no, they'll pretend like they can't go. They'll say they are also going to Florida. Come Glazers, let's go for a picnic. They'll also No, forget and which we location they also live in. need to understand that, as you said, the market is not there for the midfielder, Yeah. मेरे भाई. आप अभी 100 मिलियन आप जाओगे, 100 मिलियन लेके फॉर somebody like कार्लोस बलेबा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू वोंट. ठीक है, अभी आप जाओगे भी ना तो आपके पास एलियट एंडरसन खुद ही मना कर देगा सामने से कि साले 6 महीने में वर्ल्ड कप है, हट. Yeah. ठीक है, तो यू विल गो फॉर मिडफील्डर्स एंड वी माइट इवन ब्रिंग ऑन टू मिडफील्डर्स, बट देन इट्स गोना हैपन इन द समर विंडो. Because Casemiro will be going, रखना है नहीं रखना है, we will wait and see. We will try to offload Ugarte. जिस तरीके की बात है ब्रूनो कर रहा है, वोंट बी सरप्राइज कि भाई सामने से ही बोल दे कि भाई 80 मिलियन मिल रहा है, चले जा. ठीक है, आई वोंट बी सरप्राइज इफ द ग्लेजर्स एंड इनियोस डज दैट. ठीक है, सो वी माइट लूज आउट ऑन 2 to 3 मिडफील्डर्स. कोबी का भी पता नहीं चल रहा कि भाई वो रुकेगा नहीं रुकेगा. जस्ट इमेजिन, कोबी, उगारते, ब्रूनो, कैसेमिरो, चारों के चारों चले गए. हाँ, क्या करोगे फिर? किसके साथ खेलोगे? कॉलियर और फ्लेचर? कॉलियर को तो ये बोल रहा था कि भाई कुछ करता नहीं है. हाँ, वो तो वापस आ जाएगा. हाँ, तो फ्लेचर ब्रदर्स खिलाना फिर मिडफील्ड में, और थॉइट्स वही करना पड़ेगा फिर. वो तो सॉरी वो तो खिलाएगा नहीं. देन वी विल सी समबडी एल्स इन देयर, बिकॉज ही डज नॉट ट्रस्ट द यंगस्टर्स. वी ऑल नो दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. अरे भाई, ब्रूनो का रिप्लेसमेंट वो सब बात की बात है. आप क्लब के हिसाब से सोचना बंद कर दो मेरे भाई. मैं सही बता रहा हूँ. आप जितना लोड ले रहे हो ना कि भाई क्लब 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 क्लब, जब हम कुछ ले आएंगे ना, एज फैंस वी शुड टॉक अबाउट दैट. हम यहाँ पे बैठ के अपना खून जला ले कि भाई हमारे को 3 टॉप के प्लेयर्स चाहिए. यूनिवर्स में लगा, पागलो हैं, तुम्हारी पास है इतना टाइम बैठ के इन सब चीजों के ऊपर बात करने का. ठीक है भाई, स्क्वाड से सीजन खराब छोड़ो, मैनेजर कौन सा तीर मार रहा है भाई? जो स्क्वाड है उससे. मैं वही बोल रहा हूँ, ब्रूनो, रूबन नेवेस अगर हम ले आते हैं समर में, सॉरी विंटर में, कोई गारंटी के साथ बोलेगा कि रूबन नेवेस विल प्ले द गेम्स? कोई गारंटी करता है मेरे को अभी चैट में बताओ कि वो खेलेगा भाई गेम्स? प्लीज कोई मेरे को गारंटी बोल दो कि अरे भाई वो तो पक्की बात है अगर आएगा अगले. भाई वो बंदा 1.5 महीना उसको बोल देगा कि भाई तेरे को एक्लेमेटाइज होना है यहाँ पे. 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, जब तक वो साला 90 पे आएगा सीजन ही खत्म हो जाएगा. ही इज नॉट विलिंग टू टेक अ सिंगल रिस्क. वो फटी में है, आप समझो इस बात को. और उसने एक्सेप्ट किया है. उसने एक्सेप्ट खुद ही किया है कि भाई आई नीड टू विन, आई जस्ट हैव टू विन समहाउ एनी हाउ. उसने खुद बोला है एंड आई अप्रिशिएट हिज ऑनेस्टी फॉर दैट. उसके पहले चूरन छोड़ रहा था बैठ के, आई रेट ब्रूनो, सॉरी आई रेट कोबी, कोबी इज द बैकअप ऑफ ब्रूनो. एक मैच में कोबी जो है ब्रूनो का बैकअप नहीं आया क्योंकि ब्रूनो सब्स्टिट्यूट ही नहीं हुआ. तो वही वाली बात है भाई, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वही चीज है. आपको समझना पड़ेगा कि वो अगर लेके भी आते हैं, समर की तो बात छोड़ दो यार, समर में जो होगा समर में बात करेंगे. विंटर में ऑप्शन आपके पास लिटरली 2 है.
ठीक है, लिटरली दो है, एक दैट इज रूबन नेवेस, टू दैट इज कॉर्नर गैलेगर। इसके अलावा आपके पास विंटर में कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एडरसन का ऑप्शन भाई उसके एजेंट ने बोल दिया है, बट क्या आपको एटलांटा जाने देगी, वी विल हैव टू वेट एंड सी। ठीक है, बट प्रतीक भैया, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग बैक अगेन। प्रतीक भैया बोल रहा है नेथन ऑल सेट फॉर क्रिसमस। Yes, I am. Thank you for asking. Thank you for asking. All set, all set. Everything's चलो, और ready to जिसने भाई go. क्रिसमस का प्रेजेंट नहीं दिया अभी तक, नेथन को, बाय नॉट सब्सक्राइबिंग हिज चैनल, प्लीज डू दैट। वो Yes, ऑलरेडी please. लिंक है, Thank और you. मैं अभी वेट ही कर रहा था कि भाई कोई क्रिसमस की बात करे कि मैं ये लाइन मारूं। ठीक है, बट चलो फाइनली मेरे को लाइन मारने का मौका मिल गया। इट फील्स लाइक द मैनेजर स्टिल डोंट नो हिज बेस्ट 11। आई थिंक ही नोज हिज बेस्ट 11, बट ही इज इगोइस्टिक। आगे का मैं बोलना नहीं चाहता, क्रिसमस वाला माहौल है, बट ही इज इगोइस्टिक, डैश डैश डैश, फिल इन द ब्लैंक्स। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ईगो है, आप मानो आप नहीं मानो, दैट इज देयर। एंड एज यू सेड 11 उसको पता नहीं है, आई थिंक ही नोज। व्हाट डू यू थिंक नेथन? आई थिंक ही नोज, बट ही हिज ईगो इज देयर। I think, yeah, I think, yes, I agree. I don't think I have anything to. I think I agree spot on. I think if he picks the 11 that he knows is the best, it's going to show why he cannot play this formation. And basically, he can't afford to do that because he has now made statements which he cannot backtrack from, unfortunately. So now he has to do it. एग्जैक्टली। हेलो हेलो आयुष भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। आई थिंक वी शुड स्टार्ट लीचा एंड कैसेमीरो एंड बिल्डिंग उगाड़ते इन सेकंड हाफ भाई। मैं I'll take लीचा it. को We should put Ugarte in the opposition's team for the second half. I'll take that. भाई पिछले मैच में ना ये कमेंट आया था भाई चैट में, ठीक है, कि भाई जैसे लोन पे होता है ना कि आपका पेरेंट क्लब के अगेंस्ट आप नहीं खेल सकते, सांचो में डालना चाहिए था कि साले तू 90 मिनट्स खेलेगा, तेरे को मैनेजर हटा नहीं सकता। So that- भाई तो वही 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 वाली बात है, देखो आयुष भाई, आई वुड लव टू सी लीचा इन डिफेंस। मेरा लॉजिक है कि आपका डिफेंस चलाने वाला बंदा चाहिए। ठीक है, आपको एक पीछे एक ऐसा बंदा चाहिए जो आपका डिफेंस चलाए, जो अभी हमारा नहीं चल रहा। ठीक है, लेनी और आइडन हेवन दोनों में गलतियां बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जब दोनों गलतियां अगर शायद नहीं करे, आई वोंट बी सरप्राइज ल्यूक शॉ गलती कर दे। ठीक है, सो दैट इज द डिमीनर ऑफ आवर टीम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई टोटली अग्री विथ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, बट आई वुड लव टू सी कि थोड़ा सा जो है ना लीचा पीछे खेले। ठीक है, आई वोंट माइंड, अगर आपको उगाड़ते नहीं स्टार्ट कराना, आपको फ्लेचर स्टार्ट कराना, फ्लेचर स्टार्ट करा दो। ठीक है, गिव दैट गाय दैट कॉन्फिडेंस कि Did जा you बहन। did you did you like anything you saw from Lacey? Lacey a little less. Did you like anything you saw from भाई Fletcher? दैट शॉट, दैट कॉन्फिडेंस टू टेक दैट शॉट फ्रॉम 20 यार्ड्स की फैन से बजा दूंगा यहाँ पे। Yeah. हैं? यू This नो, you only get with youngsters. That's the no, great thing that is about the it. most क्या बोलते हो उसको, brave, Yeah. brave thing, Brave. the brave thing that I have seen in this team। क्योंकि मैनेजर से तो ब्रेवरी मैं एक्सपेक्ट करता नहीं। ठीक है, वो तो उसको इसी वजह से लेके आया भाई कि अब चल मैच हार ही रहे हैं, एक काम करते हैं खिला देते हैं, वरना साला फैन बेस फिर गाली देगा कि यंगस्टर को नहीं खिलाया। दैट्स द ओनली रीजन ही प्लेड Yeah. हिम। अगर उसको एक्चुअल में मन होता ना उसको खिलाने का, ही वुड हैव प्लेड हिम व्हेन वी वर 4-1 अप अगेंस्ट वुल्व्स। ठीक है, जहां पे अवे फैंस ने भाई पूरे स्टेडियम की मां बहन कर रखी थी, कोबी आया तो ऐसा शोर मचा दिया जैसे भाई, ठीक है, एकदम 80,000 लोग यूनाइटेड के ही बैठे हैं वहां पे। सो इफ somebody wants to play certain players, they will play regardless of the situation, especially, yes, adventurous is the word, adventurous, brave से भी ज्यादा adventurous। Yeah. I'm not saying कि भाई Fearless. हर गेम, Fearless. yes, fearless। You remember when Hannibal came on against Liverpool and then he started creating problems and then Ten Hag got angry at him and never played him again. Ten Hag only got angry at him. All the fans were like, the only person that was impressive that day was Hannibal Mabry. He came on the pitch, and he actually cared about playing the game, even though he came on only for after 90 minutes. And he got a red card, he got a yellow card in 90 seconds. And I was thinking to myself, this is the great thing about youth. Yeah, they are not scared. A lot of people think, oh, under the pressure they will crumble. I will say the opposite. I will say a lot of them have nothing to lose. If the manager treats their debut correctly, they'll have nothing to lose. Exactly। Rashford scored on debut. Rooney scored on debut. I think Greenwood scored on debut. Official games. Huh? He did play preseason game. Yeah, Uh, I mean, so many people scored on debut. Anthony scored on debut. Completely different league, completely different pressure. भाई So भाई टेंशन ही नहीं है ना। tell them, एंड yeah, स्पेशली एज अ यंगस्टर, एंटनी पे तो फिर भी प्रेशर था भाई, 90 मिलियन। yeah. And ठीक है, notice what I said. I named only wingers.
Yeah, All the examples were wingers or exactly, strikers. exactly. भाई एडरसन अनीश भाई आई वुड लव टू हैव बट देन Love it. अगेन आई थिंक Please. एडरसन एडरसन का जो है ना ही इज ट्राइंग हिज एजेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ बिडिंग वॉर Hmm. कि मतलब 25-30 मिलियन तू क्लब को दे और एक काम कर मेरी झोली भर ठीक है मेरी झोली भर क्रिसमस न्यू ईयर का टाइम आ रहा है मेरे को भी पैसे चाहिए ठीक है सो दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू राइट नाउ शुड वी चेंज द फॉर्मेशन आई थिंक रिदम भाई आई थिंक मी एंड नेथन वी बोथ हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन No. ठीक है वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द फॉर्मेशन एंड नो बडी वॉन्ट्स टू चेंज द फॉर्मेशन I've not heard from Rhythm in forever. Rhythm, I've been trying to get in touch with you. Simple answer, no. Because everyone that has backed Ruben Amorim blindly, he will betray those people. And I don't want our young fans to get heartbroken the way Eric Ten Hag broke me. The one thing I'll tell you guys, Anshuman knows, I don't watch the press conference anymore. Eric Ten भाई Hag मैं ruined it सेम for me. Ruined it. सेम He broke my heart. 2 months into the season, one reporter said, "When are we going to see the Ajax style of play?" He's saying we can't play the Ajax style. Completely broke me because of what he did to De Gea. Because the number one reason we got rid of De Gea is because of his एग्जैक्टली style of play. And when I heard it in the press conference, no, I was shattered. I was so angry. No, believe me, thank God my channel is not monetized. They would have kicked me. They would have kicked me out of YouTube. The names I would call him. No, I'm telling you, my mother wouldn't have forgiven me because that way my heart broke when and Anshuman knows I love David Day. I take him back today. I'm shameless like that because I feel I got robbed. I got robbed no, of a perfect happy ending for him. I really am. I'm really upset about that to this day. If you want to call me salty, no, I put all the salt on me when it comes to David Day. I'm the saltiest. I'm the saltiest person on earth. I'll tell you right now. And this is why I know I don't watch the press conferences, guys. He broke me completely, and I hope he doesn't do that to you because you guys will feel exactly the pain I feel, no, and you will never forget. नहीं भाई मैं पता है क्या मैं वही चीज फैन बेस को समझाने का ट्राई करूँ मैंने बोला नो लेट हिम डू हिज थिंग ठीक है हम बात करते हैं व्हाट ही इज डूइंग वेल व्हाट ही इज नॉट डूइंग वेल Yeah. ठीक है लेट्स नॉट ट्राई टू नो पोर्ट्रे हिम सम काइंड ऑफ अ मसीहा कि भाई वो सब Yeah. कुछ चेंज कर देगा लेट्स नॉट Yeah. डू दैट Yeah. ठीक है दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से यू नो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट टू द फैन बेस ठीक है आपको मैं पसंद हूं नहीं हूं एमरिम आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है उससे आपका घर नहीं चलने वाला ठीक है नहीं चलने वाला है बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब आप द मोमेंट ही सेड ना कि कोबी इज द बैकअप मैं समझ गया कि भाई ये पूरे सीजन चूरन बेचने वाला है ठीक है आई स्टॉप वॉचिंग हिज इंटरव्यूज मैं तभी सुनता हूं जब मेरे को इंजरी अपडेट्स लेने होते हैं दैट्स इट ठीक है यश भाई पूछ रहे हैं रैमोस नहीं भाई रैमोस की कोई न्यूज नहीं है Bring ठीक है him, bring वो him, bring everybody that can create some kind of steeliness. The word I'm एग्जैक्ट looking for. Bring anyone that can give you some steel to this club because these people, and I will say this at the Bournemouth game and in the Aston Villa game, it might have been a long time since their heads never dropped. And I don't think I've seen that in a back-to-back game. Yes, we lost. We got 1 point from 6. I know before anyone starts getting angry at me, but even if they drop their head, no, they pick themselves back up and continue till the end of the game. Now I know people will say this is Manchester United; they are supposed to be doing that. I agree with you, but these players do not do that. We have to acknowledge it. And the last two games, they have done it. Another positive, someone was talking about positives earlier. That is one thing I say. If we can continue this, where even if we are losing, we still do not give up, I will say this is an improvement from seasons before. Because unfortunately, whether you like these players or you don't like these players, a lot of these players have the quitter tag, and they have the quitter tag. You cannot take it away from them. And I feel that in the last two games, if this continues, I feel the quitter tag will slowly at least disappear. Made him bait. Yeah, he made Bruno bait as well. Yeah, I don't want to talk about that. I didn't like that because bad match after that interview, everyone is looking at Bruno. No, we could have played Kobbie here. We could have played Kobbie here. I'm like, so this is one thing I don't like. Everyone just scapegoat Bruno for nothing now. He has to just take the abuse. He has no choice. There's no way to get out. He just has to do it, which is very एक sad मिनट because एक he मिनट doesn't he doesn't deserve it. एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भाई मेरे ये देख लिया मैंने और ये बेन जेकब्स के ट्वीट मत शेयर किया करो बेन जेकब्स बड़ा बड़ा भड़वा है साला जब से उसने कोबी वाले सिचुएशन में बोला है ना मैं बेन जेकब्स को सुनना बंद कर दिया है मैंने Oh, but wait, he could wait. There is a release clause in January. हाँ भाई टेंथ जनवरी तक रिलीज करवा था 65 मिलियन का आफ्टर दैट इट विल बी एक्टिव इन समर
Romano already said that. I thought I didn't know it was for January. I knew the number, but I didn't know it No, was no, it January. is for January for the first 10 days, and then it will be in the summer. Hey, So wow, for after 10 days, it will be on Bournemouth whether they want to sell him or not. wow. Okay, that Okay. changes our first week at least of December by a Yeah, lot. first 10 days में ही पता लग जाएगा whether we are going to get him or not. It's not gonna drag. It's not gonna drag. That is प्रदीप good. भैया बोल रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा कि Amram is going on getting his players. भैया मैं ये कब से बोल रहा हूँ? That's what I'm saying for a very long time. He is trying to tell us that 65 million के players नहीं मिलेंगे. He cannot play proper football. And I said that, and people got offended. But that's what he's doing right now. कि उसको हर पोजीशन में वो 65 मिलियन का प्लेयर चाहिए. चलो लेमेंस अभी है 17 मिलियन का. ही विल इंप्रूव. ही इज अ कीपर. हमारे को थोड़ा सस्ते में मिल गया है. ठीक है. बट दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू. और मैंने पहले ही बोला था सीजन के शुरू में, ये सीजन कोई भी बंदा अकेडमी का नहीं आएगा. नो बडी. एंड पीपल सेड भाई कैसी बातें कर रहे हो, हमने फ्रेडरिक्सन खिलाया है, हमने चीडो खिलाया है. हमने बोला भाई उसने फटी में खिलाया है क्योंकि वो यूरोपा के चक्कर में प्लेयर्स थोड़े बचा रहा था. एंड ही ऑलरेडी गिव अप. जनवरी के पहले ही वो गिव अप कर चुका था सीजन की, भाई वी हैव टू सफर. और उसने यूरोपा के चक्कर में प्लेयर्स बचाए हैं Also, और वो. on the top of that, Pratik, why there's this point where Euro, we were talking about, someone mentioned it earlier, right? That Euro is going to be the next scapegoat. When Euro and Heaven are under this pressure, Frederiksen is just warming the bench for vibes, dude. I don't understand. He's there. He's there literally in every week squad. Play him, no. Give him an opportunity. What is the worst Exactly. that can happen? We are losing anyway half of the games. At least play him, no, nurture him, do something. You're not going to let him start under 21 regulars, and you're not going to give him game time. So then, like, in the end, we are compromising young players, even, no, and what they could possibly bring to the table. We have to at least make a decision, no, shoot or leave. Exactly. Guys, 100 plus people are watching right now. Thanks a lot for showing all the love and support. चैनल का लिंक मैं 2-3 बारी शेयर कर चुका हूं. अगर आप लोगों ने नहीं देखा या आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं फिर से शेयर कर देता हूं. सब्सक्राइब कर लो. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई विल टेल यू गाइस टू प्लीज लाइक द स्ट्रीम. 120 लोग देख रहे हैं. लाइक अभी भी 7 बचे हैं 100 होने में. तो गलती से अगर लाइक नहीं किया है तो थोड़ा सा नीचे आके लाइक कर दो. एंड यू कैन बी इन द चैट. भाई आपको चैट छोड़ना भी नहीं है. You just have to basically scroll down, like the stream, and we will keep on talking about it. आयुष भाई का एक कमेंट आया था, नॉट एक मिनट, मिडफील्ड वाला सिचुएशन. We should definitely go for Neves for stability rather than Semenyo. I think we are going for both. आयुष भाई, we are going for both because one is 15 million and एक अगर हमारे पास नहीं आएगा तो हमारे राइवल के पास जाएगा. So I think we are also looking in that way कि भाई सामने वाला स्ट्रांग ना हो जाए, एटलीस्ट हमारे पास आ जाए, भले हम उसको आउट ऑफ पोजीशन खिला दे. ठीक है, सिंपल सी बात है. सो वी विल हैव टू वेट एंड सी कि वो किस तरीके से चलता है. इज चरकी टाइप प्लेयर शेया लेसी. आई थिंक थोड़ा सा चरकी का फ्लेयर ज़्यादा है, इन माई ओपिनियन. थोड़ा सा वो ट्रिक्स एंड ऑल ज़्यादा कर सकता है, बट शेया लेसी इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर. ठीक है, वेरी गुड प्लेयर. यू जस्ट हैव टू उसको अपने आप को थोड़ा सा फिट रखना है एंड द मैनेजर हैज टू ट्रस्ट हिम मोर. ठीक है, सो वो हमारे को देखना पड़ेगा. बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट लेसी, नेथन? So at the beginning of the season, one of the rumors we heard, and again, I don't believe in until I see it, was Shea Lacey and Jim Thwaites were going to get game time this season no matter what. That was what they said at the beginning of the season, of course. So far, Shea Lacey has got game time. They never said, obviously, if he's going to start or anything. I'm sure that was it was very well worded. Let's just put it that way. Very well worded. So I think Shea Lacey, I saw him. I saw his game against Peterborough. He played very well there. I think it was the FA Cup trophy, whatever the Yeah. other FA Cup is. Yeah, it's for the lower divisions and stuff. He played well there. I think his issue is just injury prone, Tatakata. We have to really take care of him. If I may bore you people, I know we are talking forever now, but apologies, but I had to explain this the last time. When you're scouting youth players, no, you have to take one thing into consideration that has nothing to do with football, which is their growth spurt. So what the way I have been explained it to, because someone was asking about MMA, is that when you get, if you have a growth spurt, obviously some people are short. If you have a growth spurt, no, what happens is your muscles start tearing on its own, right? Because your body is expanding.
And these players, that's why people tell you, right, not to work out until you reach a certain age, like lift weights. So what happens is, with the constant physical pressure, his bones and his bone density and everything is going to be affected. So I think this is what happened with Kobbie Mainoo when he first came onto the pitch too, because he also started growing. You notice he had that really long injury, he came back looking much more filled out, much more different. It was during the time of his growth spurt. So we have to really maintain Shea Lacey's fitness, because if he does have a growth spurt, he is going to get bone injuries, joint injuries, muscle injuries, because his muscles are growing still. So we have to be careful about that. But I think it's very possible we have a new star, or at least a new upcoming talent to look forward to, which is always nice, because every year now it seems we are getting someone to look forward to every year. How they turn out is a different story, but we are, more and more so the last 4 5 years we have been seeing somebody coming out. Mainu, Collier, Greenwood, hopefully Lacey now. Exactly. Fingers crossed. Vijay Lakshmi said, "Have Chelsea has many players why they are going for him. Personally, United can't offer more money. Yeah, First of all, Vijay Lakshmi, we don't have to offer more money. It's a release clause. yeah, Okay, so you pay the amount that is in the clause. Okay, after that, it's on the player. Okay, so we don't have to pay more than 65 million. Nobody is going to, you know, uh, pay more than 65 million. But then player need to, and why Chelsea wants, because it's the same. Chelsea has a buy and sell model. They will bring on somebody like Semenyo, they will sell somebody like Garnacho or Gittins. So that's how they work. It's like hit and trial method. सॉरी एरर एंड ट्रायल मेथड कि भाई कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ जाके फिट हो ही जाएगा. ठीक है. बजाज भाई, ये एज आई सेड, ये यूट्यूब का ग्लिच है, ये कमेंट नहीं करने दे रहा. आई डोंट नो क्या ही है. वी आर मिसिंग प्लेयर्स इन मिडफील्ड. कैन वी सी सेकू कोने? भाई सेकू कोने हैज जस्ट कम बैक फ्रॉम अ वेरी वेरी टेरिबल इंजरी. तो उसको थोड़ा सा वो सेटल होने में, रिदम आने में टाइम लगेगा. नोइंग एमरिम, ही वोंट प्ले हिम. ठीक है. नोइंग एमरिम, ही वोंट प्ले हिम, क्योंकि वो इंजरी से भी आया है भाई. yeah, और इंजरी से जो भी बंदा आता है तो उसके बाद बहुत ज्यादा टाइम लेता है एमरिम. ठीक है. 65 मिलियन में भाई देखो मैंने क्या बोला. दैट्स वेयर आई से कि भाई आप पहले थोड़ा सा सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग कि डोंट बाय 65 मिलियन प्लेयर्स. आई एम सेइंग इज द मैनेजर कैन नॉट बी इन दैट पोजीशन की बोल रहा है अगर मेरे को 65 की प्लेयर नहीं मिला तो मेरा फुटबॉल नहीं हो पाएगा. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आप खरीदे हो, आपने खरीदा है ना भाई. आपने फ्रंट थ्री में 200 मिलियन डाले हैं. ठीक है. बट इफ यू कीप ऑन सेइंग कि नहीं मेरे को साला 100 मिलियन का मिडफील्डर और मेरे को जब तक उस तरीके के विंग बैक नहीं मिलेंगे मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा. दैट इज माई थिंग कि आपको अपने प्लेयर्स भी बनाने हैं. समबडी इज इंजर्ड. अभी कोई बोल सकता है कि ये रूबन एमरिम का बंदा है, रूबन एमरिम की जॉब बचा लेगा? नोबडी. नॉट अ सिंगल गाय. ठीक है. आधे स्क्वाड को बोल दोगे ना कि भाई जॉब बचाने की बारी है तो वो तो साले खेलना ही बंद कर देंगे. मैंने कहा, चल निकल. The only reason they are still behind the manager, and I'm telling you because Ineos came and said कि भाई we will give him time. If somebody is not playing for him, the player will go out, and that's why they are playing. भाई ये साले ये सुधारे नहीं गए हैं all of a sudden. ये है एक नंबर के हरामी. It's just Ineos ने आके सामने से बोल दिया है कि बेटा अगर खेलोगे तो खेलो और नहीं तो तुम टीम से बाहर जाओगे, मैनेजर नहीं जाएगा. ठीक है. एंड दैट्स द ओनली रीजन दे आर स्टिल, दे आर नो लीक्स, या उस तरीके से इंटरव्यूज नहीं आ रहे हैं, या प्लेयर साले जाके एनबीए के गेम्स नहीं देख रहे हैं. दैट्स द ओनली रीजन. वरना जिस तरीके से इसने सर्टेन प्लेयर्स को ट्रीट किया है, ये वो प्लेयर्स अभी तक वही काम कर रहे होते जो पुराने वाले कर रहे थे. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाई चलो, आई एम विद द मैनेजर इन दैट केस. बट ऑफ कोर्स इट्स गोना बी कि भाई आप सबके लिए सेम सेट ऑफ रूल्स रखो. yeah. ठीक है. सेम ये नहीं कि यंगस्टर्स के लिए अलग रूल है. ठीक है. जो साला प्लेयर उस तरीके से उसके लिए अलग रूल है, तो भाई वैसे नहीं चलेगा. देन यू वोंट हैव द रिस्पेक्ट ऑफ द अपकमिंग प्लेयर्स. ठीक है. जो कोबी की बात चल रही थी, उसने लपेट दिया भाई हैरी अमास को, उसने लपेट दिया. उसके बाद उसको लोग डिफेंड कर रहे हैं कि भाई ही टॉक्ड अबाउट शेफील्ड. साला शेफील्ड का एक्स तक नहीं बोला उसने इंटरव्यू में. ही सेड अमास. फिर लोग बोल रहे हैं भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन का. मैंने बोला कौन सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भाई? एक साल से वो बंदा फ्लुएंट इंग्लिश में 370 इंटरव्यूज दे चुका है. Also, one hot take. This might be a hot take because everyone will just say we are negative to the manager. But if I may say this, and you can go back and see for yourself, I feel Ruben Amorim is significantly more fluent in English than Eric Ten Hag. And Absolutely. the only reason I say that is, if you see the first 5 to 10 interviews of Ten Hag when he first came here,
you will hear him go, which obviously, if you ask me to speak Hindi now, I'll also do. I'm not making fun of anyone here. Everyone, I'm sure, has that issue for alternate language. But for me, I feel Ruben Amram is actually understanding and speaking. We have to understand, obviously, it is still a second language. He doesn't have a university degree in English, but his formation of sentences, I feel, is very good. Like, I could see Eric Ten Hag really struggle to say words sometime. He would pause, he would go, he's processing. Of course, it's natural. Yeah, But I honestly believe Ruben Amram, I thought from interview one, his English was sensational. I was like, yeah, wow, he'll hold his own in English. He won't feel intimidated by people's questioning. When yeah. all these media come and they use their fancy media buzzwords, he'll be prepared for it. So I thought this was great. I thought that was a very positive sign, his first interview. See, that's the thing, and that's why I keep on saying कि all of a sudden वो sentence अच्छे से form Yeah. नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं है. He said what he said and he Yeah. meant what he said. He was trying to satisfy his ego because of the frustration from Kobe's comments. कि भाई कोबी 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 वो कोबी कोबी पूछते रहे तो इसने लपेट दिया सबको और. Yeah. ठीक है. You think it's going to be Casemiro and Martinez in midfield versus Newcastle? I think it's gonna be the same, प्रतीक भैया. But I won't want it. I want Martinez in defense because हमारे डिफेंस के लिटरली घोड़े खुले पड़े हैं. मिडफील्ड के तो खुले ही पड़े थे पहले से, बट मिडफील्ड में आप फिर भी उसको थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि डिफेंसिव जा सकते हो. क्रिएटिविटी नहीं होगी, बट ब्रूनो के अलावा कोबी के अलावा वैसे भी क्रिएटिविटी नहीं है. सो आई वॉन्ट लीचा बैक इन डिफेंस, बट मेरे हिसाब से आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर वो वहां पे खेल जाए तो. माइनो इफ अवेलेबल, माइनो अवेलेबल नहीं है मेरे भाई. ठीक है. माइनो विथ माउंट माइट बी इंटरेस्टिंग. आई एम गोइंग टू से इट्स नॉट इंटरेस्टिंग. अथर्वा भाई, इट्स नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल. ठीक है. क्योंकि कोबी, एज आई कीप ऑन सेइंग, कोबी इज नॉट एन आउट सीडीएम अनलेस और until यू वांट मेसन माउंट टू प्ले एज अ सीडीएम, फिर वो दूसरी बात है. बट कोबी आउट एंड आउट सीडीएम वाला रोल नहीं खेलने पाएगा. ठीक है. रोहित भाई वेलकम. समर में रैशफोर्ड सागा इज गोइंग टू बी बैक. इट नेवर लेफ्ट. प्रतीक भैया, इट नेवर लेफ्ट. वो तो 2 हफ्ते के बाद ही चालू हो गया था कि बार्सिलोना उसको वापस भेज रही है. ठीक है. तो इट नेवर लेफ्ट. आई एम नॉट प्रेजिंग कॉम्पिटिशन, वी हैव टू सिंग क्वालिटी प्लेयर्स. It's the reality, right? It is not the reality. I am not dishing out Amarim, but the reality is also, if you are a good manager, you improve players. If you are saying the reality is कि भाई quality चाहिए, बिल्कुल चाहिए, absolutely चाहिए. And as I said, मुझे 65 million के players के साथ problem नहीं है. My problem is Amarim ने किसको improve किया है? Which player has improved? आप मेरे को डिलीट का नाम मत लेना, ठीक है. और मेरे को ये बोल देना कि ब्रूनो फर्नांडिस, कि भाई डीप रोल से भी देखो कैसे गोल और असिस्ट कर रहा है. मैं पागल हो जाऊंगा, मैं सर्वर मार लूंगा अपना कहीं गुस्से में आके. एंड प्लीज डोंट टेल मी द नेम ऑफ कैसेमिरो. कैसेमिरो पहला सीजन कैसा खेला था? इन अ 2-man मिडफील्ड, With विथ Ericsson. विथ एरिक्सन विथ फकिंग एरिक्सन. वो सबको पता है. ठीक है. I mean, he's not a bad player, yeah, but he's way past his prime. Yeah, I feel like we are insulting Ericsson. I want to be very clear. It's not his no, fault, नो but इट्स नॉट. he's दैट्स व्हाट आई past एम his सेइंग. prime. आई एम जस्ट ट्राइंग टू कि भाई 31 साल के दो बंदे उस मिडफील्ड में भी डोमिनेट कर रहे थे पहले सीजन में एरिक टेन हाग के. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू And से. they had a great partnership. I believe या Ericsson was giving him assists, या which was excellent. एग्जैक्टली. Right? सो दैट्स व्हाट आई एम Wasn't the सेइंग. Bournemouth game we won 1-0? Wasn't it Ericsson's assist for Casemiro's header? I believe we won the Bournemouth game 1-0 one of those seasons. I think it was from Ericsson only, the cross. हाँ, मतलब वही है. आई थिंक ही स्कोर्ड एंड आई थिंक इट वाज एरिक्सन. Yeah. आई थिंक इट वाज एरिक्सन. ठीक है. लोग बोल रहे हैं अमाद. भाई अमाद के तो मैंने लाइव एग्जांपल देके बता दिया है. हाँ? जैसे ही बड़ा गेम आता है अमाद होता ही नहीं है. Also, Ahmad doesn't want to play wing back here. That's the Yeah. real problem. अमाद एक एक झटके में चले जाता है पिच के बाहर. The biggest, when we talk about, and I'm not even talking about defending. Let's talk about one thing. अमाद, ठीक है, वो क्या 90 मिनट बॉम्बार्ड करता है आगे पीछे? नो. पहली बात. ठीक है. दूसरी बात, That's not his game. या दूसरी बात, द मोमेंट देयर इज अ चांस टू टेक ऑन, उसकी फट जाती है. कभी कभी तुमने देखा है डिमार्को की फटते हुए, कभी तुमने देखा है डम्फ्रीज की फटते हुए.
वो बॉल लूज कर जाए, वो अपने आप को बैक करते हैं भैंस की आंख, पीछे जाके छीन लूंगा बॉल। अमाद को पता है पीछे छीनने जाऊंगा बॉल, एक रैप्टा बजा देंगे तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। Anshuman, if you don't mind, can you refresh my memory? Because there's something I was thinking about when you said that, when he doesn't want to take on players. I don't believe Ahmad Diallo is a one-footed player. No, But he's not. there is something about this season where he has decided to cut back and cross on his left because he is left-footed. And Yeah. I thought to myself, wait, the advantage of being two-footed is they don't know if you're going to go outside or inside. But he has constantly gone inside. Constantly. And I'm very confused as to why he has done it this season. See, that's what I said. कि वो गेम स्लो कर देता है भाई, ही इज नॉट बैकिंग हिमसेल्फ इन वो सिचुएशंस। मे बी वो इस फटी में है कि भाई अगर मैंने कहीं बॉल लूज कर दिया, आई कैन नॉट गेट बैक, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक Maybe. विंग बैक का माइंडसेट होता है, बेंच अगर बॉल लूज किया मैं छीन लूंगा तेरे से। ठीक है, थियो हर्नांडेज कौन सा डिफेंसिव मार्वल था भाई? हाँ? थियो हर्नांडेज यूज्ड टू जस्ट रन एंड रन एंड रन। वो अपने हाथ से बॉल ले जाके गोल मारे हैं उसने। That's what I'm saying, and that's what I talked about. That's why I talk about Dumfries. That's why I talk about somebody like Frimpong. That's what they used to do as wingbacks. They back their pace. He is not backing himself to do that. वो ऐसा है कि भाई मैं कहीं बॉल लूज ना कर दूं। जब आप इस माइंडसेट के साथ खेलोगे ना, यू विल लूज बॉल मोर ऑफन, एंड आपका गेम भी इम्पैक्ट होगा। ये तो डोरगू है भाई, चाइना जैक पकड़े, ये डोरगू है, ये और कोई नहीं, वो डोरगू ही है। टू मिडफील्डर एंड बोथ साइड विंग बैक शुड बी अ प्रायोरिटी, दैट शुड हैव बीन अ प्रायोरिटी इन द लास्ट समर मेरे भाई। The wingback should have been a priority in the last summer. There was no need of two number 10s. There were no need of a particular striker जिसका फैसिनेशन विवेल को बहुत ज्यादा था। एंड आई एम नॉट सेइंग कि उसको वो एमरिम का फैसिनेशन था। लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि भाई वो तो हॉलैंड तो इसीलिए गया क्योंकि उसको हमने प्री सीजन से हटा दिया। अरे प्री सीजन से क्यों हटाया था ये तो बताओ। Also, ये in fairness to Amarim, apparently he wanted Ollie Watkins and he didn't get it. Let's Yeah, defend so he let's wanted, defend Amarim even, no? This in this case. yeah, He yeah, that's wanted a what I player. said, कि Amarim has nothing to do with Sesko. It was all विवेल का फैसिनेशन था Sesko। सो आई एम नॉट गोइंग टू से कि भाई हर चीज में बहन के एमरिम ही लपेट दो। ठीक है कि कुछ Yeah. किसी ने कुछ नहीं किया तो एमरिम, अब भाई कोई फिनिश नहीं कर रहा है, एमरिम थोड़ी लपेटूंगा। बट अगर वो फिनिश करने के बाद भी, अगर फिनिश नहीं करने के बाद भी 90 मिनट खेल रहा है, उसमें एमरिम को लपेटूंगा कि साले तू हटा क्यों नहीं रहा। हर चीज में एमरिम की गलती नहीं है, बट जहां गलती है अगर वहां पे भी आप बोल रहे हो कि भाई आंखें बंद कर लो गांधी बन जाओ, तो वो तो थोड़ी हो पाएगा भाई। वो तो पॉसिबल नहीं है। तो वही है, तो भाई फैक्ट उस तरीके से करो कि भाई सामने सारी बातें हों। बड़ा बड़ा इजी है बोल देना कि भाई हॉयलैंड तब गया भाई जब उसको हमने प्री सीजन से निकाल दिया। हॉयलैंड पहले के 3 प्री सीजन खेला था मेरे भाई, रिफ्रेश योर मेमोरीज। ही प्लेड द मोमेंट वो हुआ कि भाई सेस्को आ सकता है, और जब सेस्को के डील हो गया उसके बाद हमने उसको बिठा दिया। ठीक है, देन वी स्टार्टेड प्लेइंग अदर प्लेयर्स। ठीक है, देन वी स्टार्टेड प्लेइंग अदर प्लेयर्स कि भाई नाउ वी डोंट हैव टू प्ले हिम, वी हैव टू वेट फॉर सेस्को। चलो भाई, चेल्सी रेस से बाहर है नेथन फॉर सेमेन्यो। Really? हाँ, अभी Wow. जो ऑनस्टीन का ट्वीट आया। They must have मैं not भाई, seen that away days episode where Semenyo was doing the Drogba celebration. चेल्सी गॉट रिजेक्टेड, मैंने तो यही कमेंट कर दिया है। ऑनस्टीन का अपडेट मैं दिखा देता हूँ भाई, रुक जाओ, लेट मी शो यू, लेट मी शेयर विथ यू गाइस। मैंने तो कमेंट भी कर दिया भाई, चेल्सी गॉट रिजेक्टेड, सिंपल सी बात है। Wow. ये लो, दिस इज द सेमेन्यो थिंग। Confidence in depth and quality of existing options will continue. Yeah, this is precisely why I don't think even cities, not cities in the race. I shouldn't say it like that. I feel like he सिटी might not be attracted to City. आई This is थिंक one ही thing. विल बी अट्रैक्टेड टू सिटी मेरे भाई, आई थिंक But दैट वे। this reason, no confidence in depth plus quality of existing options. I think this is if this is his feeling in Chelsea, then this should also be his feeling in City. I would say City has better quality options in his position. So नहीं नहीं, I'd probably चेल्सी को कॉन्फिडेंस है भाई, चेल्सी को, इट्स नॉट अबाउट oh सेमेन्यो। sorry. I didn't read that right. Then. या Sorry. चेल्सी, Confidence in depth. Confidence in depth. Sorry, I read that या wrong. Yes, दे that's right. हैव द कॉन्फिडेंस इन देयर, ये देखो। Well, yeah, fair enough. One person we don't have to worry about. One team, I mean, we'll take अबे it. रुक जाओ एक सेकंड। Yeah. अरे भाई मैं चेल्सी वालों के मजे ले रहा हूँ भाई, तू मेरी हर बात को ट्विटर पे सीरियसली मत। मैं ट्विटर पे जो भी लिखता हूँ, मैं
एवी बकचोदी पेलता उधर। मेरे ट्विटर को अगर आप सीरियसली ले रहे हो तो फिर तो मैं रील रील देख के फुटबॉल फॉलो करने वाले से भी वर्स्ट हूँ मैं ऐसी ऐसी चीजें लिखता हूँ ट्विटर पे। तो मेरा ट्विटर सीरियसली मत लो, वहां पे बस मैं फैंस की मारने जाता हूँ, राइवल्स की। ठीक है, सो दिस इज द ट्वीट। This is the tweet. Chelsea decide against pursuing Semenyo. Initial inquiry but not planning to do go further. Confidence in depth plus भाई है भी तो इनके पास 400 प्लेयर्स, इसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा डेप्थ में तो भैंस की यहाँ कब आएगा? हाँ? अगर इसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं है देन व्हेन आर यू गोइंग टू गेट द कॉन्फिडेंस? राइट, Also, नो लेफ्ट विंग। there are left wing. Vijay Lakshmi, I did a short. Literally, I'm doing shorts now. By the way, guys, या आई very, सॉ very, आई सॉ very alien for me to do it, but I'm doing it. Apparently, I forgot his name even. Yeah, now I'm looking like a fool. But he's in. Vijay Lakshmi is going to love this. They want the Sheffield Wednesday left back who's 17 या years old for 450,000 pounds. या We have lots of left wing back links. It's the ones we don't want. That's the difference. भाई मैं सही बता रहा हूँ, ये कोई फिरकी ले रहा है, ये जो सर जिम रैटक्लिफ की है ना, वो कोई कोई फिरकी ले रहा है, उसकी कबर में ऑलरेडी एक पैर है भाई। ठीक है, ये 17 साल के लौंडे ले लेके आ रहे हैं, लौंडे लपाड़े। ठीक है, वो जब तक वो 22-25 साल के होंगे ना, ये सर जिम रैटक्लिफ नहीं होएगा। ठीक है, उसकी हालत वैसे ही खराब होते जा रही है हर यूनाइटेड मैच देख के। ठीक है, वो भी सोच रहा था भैंस किया अच्छा था, साला चेल्सी का ही मैच जाके देख लेता था सीजन टिकट होल्डर को। This is that only. No, I'm saying there's something really. His obsession with Chelsea, is like Slot's obsession with PSG. They are, it's हाँ, very unhealthy. It's a very unhealthy. I don't know भाई what एट is his व्हाट thing. टाइम। Yeah, just youth academy, youth academy. Now I ये told you earlier. No, we read it for anyone who missed. By the way, I read हाँ out. Chris Wheeler says, I forgot his name. Some Dan Midgley, no, what CEO, whatever, हाँ president in हाँ charge of youth recruitment. We have signed another Newcastle United uh, administrator हाँ, to our छोड़ो club. भाई उसको। तहस भाई, आई वोंट आस्क एमरिम टू चेंज द फॉर्मेशन। It's too late now. Can't इट्स do टू it. लेट नाउ, यप इट्स टू लेट नाउ। ठीक है, आर वी प्लानिंग टू प्ले सेमेन्यो 10 लेफ्ट विंग बैक भाई, लेफ्ट विंग बैक। Left wing back, Chiranjeev. लेफ्ट विंग बैक इफ यूनाइटेड We, सेंड we ऑफिशियल बिड will फॉर be there. सेमेन्यो। We will be there, and we या deserve to. We deserve not to be made fun of. यप That also, I tell you, we deserve to यप be made fun of if it happens. भाई, तभी मैं बोल रहा हूँ अगर हमने उसको ये प्रोजेक्ट बेचा है उसके बाद भी वो आना चाहता है, फेयर इनफ टू द मैनेजर, फेयर इनफ टू द प्लेयर, बट फॉर हिज ओन गुड आई वुड वांट हिम टू रिजेक्ट अस। कि भाई अपना मजाक मत बनवा यहाँ आके, यू आर वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ। ठीक है, अनलेस और अनटिल कि भाई सामने एमरिम उसको चूरन बेच दे कि अरे Yeah. तू नंबर 10 है भाई, Yeah. कुनिया खेलेगा पीछे, कुनिया चल बेटा कल से तू लेफ्ट विंग बैक। Arey, the more I think about it, no, Dogu is going further and further back on this एग्जैक्टली, left wing list. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। Arey, yaar. बट छोड़ो भाई लोग, Don't buy anyone from the bottom half of Serie A. That's your new lesson we have learned today, guys. भाई देयर वाज नो रीजन टू गो फॉर डॉर्गू एंड दैट टू लाइक क्रेजी। हमने लिटरली 15-20 दिन डॉर्गू पे भी लगाए थे, इफ यू रिमेंबर वी केप्ट We broke the transfer record. या But do you know who we broke the transfer record against? Oh, you're going to love this, Anshuman. I can't wait to tell you. You know what the previous record was? मे बी अराउंड 6 or 7 million समथिंग लाइक No, दैट। no, forget the number. Do you know who the player was? नो The player was Martin Ullman to Sporting Lisbon. There we go. Yes, I finally got Anshuman out. Yes. भाई Yes. साहब, Amarim's leches of addiction. Yes, look at that. That face says everything. That मैं face क्या ही says बोलूं। everything. As Keegan said, we had Alvaro. He did not even want to see Alvaro. No, People who are don't make me cry. Yeah. yeah, no, no, These no, Real Madrid fans say no, no. thank you for Alvaro and they depress me. Yeah. I don't Yeah. want to See, talk the about thing so is, much. I want to talk about the Alvaro situation because people who say Alvaro did not want to come, that's why we did not go for him. अरे Alvaro हमारे पापा का बेटा थोड़ी है, हैं कि वो बोल देगा और हम सुन लेंगे. We had the clause to bring him back to the club. हम उसको यहाँ लाके उसके साथ क्या करते हैं, मैड्रिड को बेच देते हैं, मुंबई एफसी को बेच देते हैं, दैट इज आवर चॉइस. ठीक है,
वो थोड़ी डिक्टेट कर रहा है। हाँ, अभी आप बोल रहे हो भाई कल्चर कल्चर कल्चर, Yeah. और उसके बाद बोल रहे हो कि अरे भाई एक काम करो यार, हमारे को ना 19 साल के लौंडे ने बोल दिया मैं वापस नहीं आऊंगा, तो लेट्स मूव ऑन टू समबडी एल्स। तो मतलब ये तो दोगलापन तो अलग ही लेवल का है भाई। हाँ? और तो मैं क्या ही बोलूं। व्हाट इफ कुनिया प्लेस 9 विद सेस्को आफ्टर जर्सी एंड सेमेन्यो प्लेस, हैं भाई, हैं कुनिया प्लेस So 9। that means we have 75 million on the bench. We have become like Liverpool now. We या put our expensive signings on the bench now. Oh भाई God, अगर yeah. ये चीज है ना तो सबसे पहले सुसाइड कर लेगा विवेल। इफ दिस हैपेंस विवेल विल, सही बता रहा हूँ मैं मजाक नहीं कर रहा। हाँ, Arey, मैं yeah, सही today, में। today, today, someone you have to clip the look on Anshuman's face when I told him Yulmun. Yeah, you have to put it up there. I can't भाई मैं believe you didn't know this. But I was crying. Actually wanted to cry knowing that Alvaro was playing well. Yeah, when I found this out, Sporting Lisbon, he was the manager, broke it. He's come to United, broke it again, got Dogu. I was like, oh क्या wow, ये yeah, this बोलो is भाई। great. अरमान भाई पूछ रहे हाउ गुड हैज बीन लमेंस, मेरे हिसाब से 7/10 यार। आई थिंक ही इज नॉट गेटिंग द डिफेंस Yeah, हेल्प। ठीक है, मिडफील्ड का हेल्प नहीं मिल रहा। ही हैज मेड सम गुड सेव्स, yeah, कुछ सेव्स वो कर भी सकता था, बट देन फर्स्ट सीजन है, इट्स गोना इम्प्रूव फॉर हिम एज वेल। ठीक है, वो भी उस तरीके के वेदर में, उस तरीके के इन्वायरमेंट में, उस तरीके के पिच पे ही इज ऑल्सो सेटलिंग इन। सो फार अ सॉलिड 7/10। ठीक है, व्हेन पीपल से कि भाई वो सेमेनियो वाला सेव करना चाहिए था, तो भाई उसने ही हमारी गांड भी बचाई एंड में, वरना वो 6-4 होता बॉर्मथ। ठीक है, सो ही कॉम्पनसेटेड फॉर दैट। और वो भी पहले वाले गोल में इट वाज हेवन। ठीक है, हेवन। ठीक है। yeah. जो लोग भी फॉर्मेशन चेंज की बात कर रहे हैं यार, एज आई कीप ऑन सेइंग, अगर अभी एमरिम फॉर्मेशन चेंज करता है तो उससे बड़ा फुद्दू कोई नहीं लगेगा, सिर्फ एक प्लेयर के लिए। ठीक है, एफकॉन में कर रहा है फॉर फ्यू गेम्स, फेयर इनफ। If we are ठीक है, going to change any formation for a player, it should be for Bruno. या I know he's not the future, but while we have him, that's why we एग्जैक्टली, should change the formation. एग्जैक्टली। And one thing I am worried about Lamans Aryan is या his positional awareness. Remember that free kick? It kind of went straight at him. या When Bruno showing where the ball is going to go, he still had a delay dive. If you see in the slow motion, या he doesn't See, read the that's what I keeper. said. That's what I said. Positional awareness, but he's Yeah, young. He's young, so exactly. And and that also positional awareness also I think comes from playing with certain defense. यहाँ पे हर दूसरे दिन हमारा defense change हो जाता है. yeah. And Rio also, said that. No, Rio said yeah, that. But now because he's a YouTuber, people don't take him seriously. yeah, Rio Ferdinand automatically said, "I don't understand why he keeps changing the back three. yeah, How is anyone supposed to get used to how they are playing? I played with Vidic for 400 games. yeah, No one replaced us if we were not injured. exactly, What do you say then? Then they'll say, "Arey, yeah, he's just trying to pile on Amarim. Now he's become a exactly, YouTuber." So I was like, "Okay, yeah, Baba, exactly. he's a YouTuber. Leave it." What else to say? No matter what anyone says, no, there's an excuse to go. Don't believe this fellow. So leave it Ex- there. Let it go. एग्जैक्टली। व्हाट यू गुड विंग बैक इन द मार्केट यार, मेरे हिसाब से गुड विंग बैक हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स डिमार्को इज द प्रेफर्ड चॉइस। ठीक है, यू कैन मेक अ चीकी बिड फॉर समबडी लाइक थियो हर्नांडिस एज वेल, जस्ट टू टेस्ट हिज रेजिलियंस। कि भाई एक ही साल तो हुआ है तेरे को, अभी गए हुए, एक काम कर वापस आजा प्रीमियर लीग। ठीक है, एक साल में क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो ये दिस कैन बी डन फॉर अ सिग्निफिकेंट लेसर अमाउंट फॉर सेमेन्यो इन दैट रोल। I'm not against the signing of Semenyo, I'm just against the positioning of Yeah. Semenyo. And as Pratik Bhaiya said, ठीक है, कि भाई Amrin will be like, if Ahmad is playing as a wing back, 100%। Oh no. Oh भैया God. ये Can you फ्यूचर की नहीं है। imagine we buy him and he's sitting on the या bench? Oh my God. या ये फ्यूचर की भी बात नहीं है, दिस इज एब्सोल्यूट टू द पॉइंट फैक्ट्स। ठीक है, राघव भाई बोल रहे हैं नेथन को, हेलो हेलो नेथन भाई वेलकम, सॉरी हेलो राघव भाई वेलकम। थॉट्स ऑन शेयर लिस्ट अंडर एमरिम भाई, आई डोंट हैव एनी थॉट्स फॉर एनी यंगस्टर अंडर रूबन एमरिम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट शेयर लिसी, एनी यंगस्टर आई डोंट हैव एनी थॉट्स। ठीक है, वो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कुछ बंदों को गेम टाइम दे देता है, तो वो भी आउट ऑफ पोजीशन खिलाता है। लुक एट हेवन, टोटली लुक्स क्लूलेस इन दैट रोल। ठीक है, वो 10 मिनट अगर अच्छा खेल जाता है, वो 15वें मिनट में कोई ना कोई गलती कर देता है। अगर पहला गोल गलती था फर्स्ट गेम में, सॉरी अगेंस्ट विला, इट वाज यूरो। सेकंड गोल में गलती, सेकंड गोल में गलती है सबसे पहले
उसकी हेवन की, हेवन सो गया भाई. ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट क्रॉस. Yeah. हेवन सो गया वहां पे. सो वही चीज बोल रहा हूँ, दीज आर यंग प्लेयर्स, दे विल अंडरस्टैंड, दे विल रियलाइज. बट देन अगेन ही इज अ लेफ्ट सेंटर बैक. मिडिल में आप ऐसा बंदा चाहते हो जो गेम चलाए. ठीक है कि भाई तू साइड में है, मेरे साइड में है, ठीक है, सब कुछ सही है. तो वो चीज है. राइट विंग बैक भाई, हम नहीं लगता कि हम किसी को लेने जाएंगे, अमाद ही खेलेगा. We have the अगर best अमाद. right we have the best right wing back in the league. या भाई, वी हैव डालो. तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. द लीडर, द लेजेंड, द मिथ, ऑल इन वन. ठीक है, डालो इज हियर. ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. Should डोंट we बी should we सरप्राइज. talk should I give you my explanation? We are talking Yeah, about yeah, wing backs. definitely. See, I'm curious I to will, I hear will tell what you people first. think. I will tell you first why I don't rate Dallo that much. As I have always said, Dallo as a backup, I have not. I don't have a problem. Simple as that. I never said कि भाई Dallo ये है. I always said अगर backup है तो ठीक है, because first of all, and the only reason that I back Dallo is he is always fit. Yeah. ठीक है, वो लेफ्ट Fine. राइट दोनों खेल सकता है. Yeah. एटलीस्ट वो बंदा फिट है. Yeah. ठीक है, ही हार्डली हैज सफर्ड एनी इंजरीज, या उस तरीके से वो मिस किया है उसने गेम. Yeah. फॉर मी, व्हेन वी लुक एट समबडी लाइक डालो, गेम उसकी गलतियां, Yeah. ठीक है, उसकी खुद की गलतियां ज्यादा है, रादर देन बीइंग एब्सोल्युटली डेसिमेटेड बाय द ओपोनेंट्स. एंड नाउ ही इज 27. Yeah. ठीक है, उसको 7 साल 8 साल हो गए हैं क्लब में. ही हैज हार्डली इंप्रूव्ड एट ऑल. जो वो 18 साल की उम्र में कर रहा था, वो अभी भी वही कर रहा है. ठीक है, सो मेरा ये नहीं है कि भाई अगर इंप्रूव नहीं कर. Guys, can you hear me? Am I am I lagging or not? I will take chats until Anshuman comes back. Oh, you're back. Okay, good. यार जब भी Sorry. डालो, बात करता हूँ नेटवर्क चले जाता है. हरामी डालो. मैं साले हैं, ऑटो डब करके सुनता है हमारी बातें ये. भाई मैं सही बता रहा हूँ, जब भी No, इसको. I'm not clueless, Raghav. I actually thought it was my internet. That's why I was clueless. Then I had to double check to see Yeah, whose yeah, it internet was it it is. was Yeah. my internet, it was Yeah. my internet. So yeah, see, that's the thing. Yeah. So that is my point कि अगर वही चीज, आई कीप ऑन सेइंग, जैसे वो पिछले 3-4 मैचेस में खेला है, उसने बहुत ज्यादा कोई ओवर द टॉप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है. बट ही हैज Solid. केप्ट इट सिंपल. ही हैज बीन सॉलिड. खुद से गलती नहीं करी है. आई थिंक विला वाले गेम में द ओनली लैप्स इन कंसंट्रेशन वाज व्हेन ही वाज, दो दूसरे गोल के लिए क्रॉस आ गया था. Yeah. ठीक है, Yeah. सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ कीपिंग डालो एज आवर फर्स्ट चॉइस. बैकअप में मुझे प्रॉब्लम नहीं है. मेजोरिटी ऑफ द गेम जहां पे हम उसको बैकअप यूज करेंगे, ही विल बी मोर देन एनफ टू गेट ओवर द लाइन. My problem has been his own mistakes rather than getting decimated. And when you are in that age, you have to be better. Okay, then you Fair enough. cannot perform as a like a 20-year-old. Naga boy saying Dallo's ass. He's not the Naga boy, and I'll explain why. I'll give you my point. First of all, some of the things that Anshuman says, I think I agree with, and I'll start with those. But just to go back to the second goal, no, the one thing I want to say, because Vijay Lakshmi pointed, his point is kind of related to that, so I want to bring it up. There were many times where Dogu was ahead, but the midfielder and Shaw was stopping that same issue from happening. Here, what happened is the defender was coming, then he backed up, but Dallo was way in front, so Dallo had to cut ground, then they cut back, and then the cross was released. Obviously, I'm not saying Dallo is not at fault, but I'm just saying the difference was it was happening on the left side too. Dogu was way ahead, and I believe Shaw and it wasn't Ugarte. Who was the other? Or I guess it was Bruno, right? It was Bruno and then Lisandro. They were cutting in because I remember seeing Dogo. I'm like, Arey, why is he there? Yaar, there's nobody here now. This Shaw has to come out of position. If they overlap from the middle of the pitch, it'll be dangerous. But he was cutting. But then, like you said, no, Yoro and Heaven are having that confidence issue. They don't want to come that far out. So anyway, yeah, sure. Let's say it's Dallo's fault. Dallo should have cut back. What if sometimes you miss a pass, you're already ahead. Then you have to fall back.
It is what it is. I'm not defending him. If it, I would say Dallo is responsible a little bit as well. But I noticed if you see the replay, you see the centre back coming in and then he falls back. He doesn't want to commit one way or the other, and then it becomes like Dallo has to come and chase him then, and then the cross happens. But anyway, forget that. So to start off your point, no, I said something on Mohawk's channel at the beginning of the season. He asked me a question saying, who do you need to have a good season this year? He said, not new signings. I told him I need Diego Dallo. And he asked me, are you being serious? I said, yeah. And I said, allow me to explain. This is where the agenda sir. That's why people are saying, we can't wait to hear this argument. I told them, see, you have to understand something. It is less about Dallo being good and Dallo being better than the rest. So now, and then I said, and then I had to explain, obviously. So I'll explain it here. Think of the people in his competitors. Let's say his competition. Dogu, I don't think he's good at all. I've been saying it in January. I know people say he's young, but then the same energy is not kept for Euro and Heaven and Rasmus and everyone. The posts are changing. I don't think that's fair. Either they are young or they're not all young, or they're all not good enough. They can't be some good, some not good. I don't agree Yeah. with that at that age. So there's Dogu. Then there's Mazraoui, who was a right back his whole life and only played right centre back the moment he came to Manchester United. This man is closing in on 30 years old. His best position, everyone will say, is right centre back, which is a position he's never played in his life. He played right back a few days ago because they play a back four. He's never played right centre back anywhere. He's only played right centre back here out of necessity, not due to injuries. Just so I'm clear. I'm sure maybe he played for Morocco. I don't know. I don't watch Morocco like that. No, no, no. He So, don't so even that, play for huh, Morocco. He has played for as a wing back. He has not played as a right centre back. Centre back, right? So for me, Mazraoui is better defensively, which means Ruben's Amarim's idea of a wing back is to bomb forward and cross. Mazraoui is not going to do that. Whatever you think about Dallo's crosses, Dallo will cross more. So that ends that conversation based on his ideals of a wing back, not my personal opinion on who's a better crosser. So that is Mazraoui, that is Dogu. The next is Ahmad. None of us want Ahmad to play in defense. He's too short. We saw one of the goals at the beginning of the season where the person from the opposite side targeted the far post and Ahmad can't jump. Because I mean he's a short man. How high he'll jump? How high he'll jump? He can only jump so high. They scored a goal that way. Then people are saying they will target Ahmad. They are not targeting Ahmad. They are targeting Ruben Amarim's use of Ahmad. No one would Yeah, have put Ahmad in the back post because he's too short. exactly. That's just how that is. So if you look at the playing field, Anshuman, Dallo is our best player. It's not Yeah, about right. it's not No, about how good Dallo is. Dallo is the best player for the position who yeah, we that's what have. I'm saying. No, but Right people now, are and like as Dallo's ass. But if Dallo's ass, you tell me no, Anshuman. You tell me how good Mazraoui will play at left wing back. Not right see, even that's wing, what left wing back. see, that's what He'll I'm be saying. horrible. Yeah, At this point of time, what I'm trying to that's what I'm trying to say as well. yeah, कि अभी के exactly. लिए and that's you Gibbs have to white goal. play Thank game you, by Yash. game. Yeah, That's what you have to do yeah, game by game. If he's doing yeah, well, fair enough. But then, as Arson said, a wing back who cannot cross is not a yeah, wing back at all, and I totally agree. yeah, Neither yeah, Dallo can cross, but then again, the player, that is on the manager as well. yeah, कि भाई वो क्रॉस डलवाए yeah, वो क्रॉस डलवाए आई कीप ऑन सेइंग यस प्लेयर्स अगर वो उस तरीके से नहीं कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाई गिव सर एलेक्स एग्जांपल कि सालो तुमने अगर बॉल वैन पर्सी के पैड पे नहीं गिराया तो तुम खेलोगे नहीं yeah, where is that, and that's why I said, as you said, shifting of posts, that's what he yeah, does. yeah. Certain youngsters के साथ he does the same. वो नहीं खेले तुरंत निकाल दो. ठीक है. Yeah, so that is my thing. It's not like as people like to say nowadays, Dalo Paglu. It is just evidence and fact. It's not even opinion. Like if you take all these factors, plus he's not injured. How many games has Mazraoui missed? If मैं if वही बोल रहा हूँ. Dallo's and also one more thing, guys, if Dallo's bang average, what the hell is Dogu? What do you call Dogu if you think Dallo's नहीं bang देखो average? that's what I said, and for that point I give that कि भाई डोरगू का फिर भी अगर आप देखोगे तो ये पहला ही सीजन है. I Yeah, keep on saying that, and yeah, for that reason I don't put Dorgu and Dallo fair का enough. comparison. It's Hmm. just at this point of time Dorgu से better कर रहा है Dallo, and that is a fact. Exactly. Unless or That's until it. you decide to play Luke Shaw as a left Yeah. wing back, then Oh, I then will they see. then they're both on the bench.
sit both of them Yeah, on the bench. Yeah. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो ये Yeah, चीजें so समझना पड़ेगा. yeah, so I don't think there's much to debate. I think it is just based on evidence, guys. I thought Anshuman was going to retort, but I think we actually both agree on everything. या I think we एग्जैक्टली भाई basically ये agree on everything, which is interesting या because people think that there's going to be a lot of people think you're just Dallo out. Every lot of people are Dallo. I'm like, bro, you're Dallo in or out. It doesn't matter. Dallo is the अरे best भाई option. Period. मैं तो डायलो इन आउट की बात ही नहीं करता. ठीक Huh. है, ये रोमानो का नया ट्वीट आया है भाई. मैनचेस्टर सिटी हैव बीन पुशिंग अ लॉट इन द लास्ट 12 years टू ट्राई टू एडवांस ऑन सेमेनियो डील. डायरेक्ट टॉक विद प्लेयर्स कैंप वांट फाइनल आंसर सून एज पॉसिबल. ठीक है. लिवरपूल मॉनिटरिंग, चेल्सी आर आउट, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड इट्स मैन सिटी. I'll be a little आई surprised only because of the quality they have. No, this is the best part. No, Chelsea is saying they have quality and depth. Then what does Man City have? That's सी the interesting thing. द थिंग इज Yeah, Chelsea knows they won't stand a chance against Man City. ठीक है. They won't. Let's be honest. The yeah, we are only in this because we are only in this because Amrim पगलू है for Semenyo. yeah, ठीक है. And we need some attacking threat now that we are also without Bruno Fernandes for the upcoming games. yeah, ठीक है. But then apart from that, we are not offering anything to him. yeah, You know, he will go to City. He will be most likely a Premier League winner by the end of the season. You know, it's like a 50-50 between Liverpool, Arsenal and Man City right now. So yeah, Premier League winner in the very first 6 months, yeah. and that is the thing that will definitely be on his mind. Sure. Yeah, And that sure. is the most important thing No, in I'm my not saying opinion. I'm not saying he doesn't have any benefits. My thing was only if this man is ambitious, like how we say Erasmus is No, he ambitious. has talked about ambition. He Yeah, talked about yeah, Calvin Phillips. He gave the example yeah, कि भाई when he went to that City team, it was already full of stars. yeah, ठीक है ऋतिक भाई. डिनर पे आप भी बहुत लड़कियों को लेके गए होगे, बट आप सारी लड़कियां आपके पास नहीं आ जाती ना ऋतिक भाई. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. मैं अपनी भी बात करूंगा. मैं सारी बातें करूंगा. डिनर इज अ गुड थिंग, बट देन डिनर इज नॉट प्रीमियर लीग मेडल. ठीक yeah. है. डिनर 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 इज That's नॉट. true. ठीक है. That's true. मतलब भाई देखो, बहुत सारे प्लेयर्स का ना अपना अपना माइंडसेट होता है ऋतिक भाई. मैं एक प्रीमियर लीग. ठीक है. अब बहुत प्लेयर्स का ऐसा भी होता है कि यार उसको शांति में खेलना है फुटबॉल. एटिहाद इज द बेस्ट प्लेस. ठीक है. वो बेचारे को शोर पसंद नहीं होगा. ठीक है. ही वांट्स टू प्ले इन एनवायरनमेंट जहां पे उसको बहुत ज्यादा उस तरीके से फैंस की आवाज ना है. एटिहाद इज द बेस्ट प्लेस. ठीक है. शोर मचता नहीं, आराम से फोकस करके फुटबॉल खेल सकता है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट गोज व्हेन वी टॉक अबाउट सर्टेन प्लेयर. हर किसी का माइंडसेट डिफरेंट होता है. फ्यू वांट टू टेक दोस चैलेंजेस. ठीक है. फ्यू जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ विनिंग टीम. ठीक है. तो वो उसी तरीके की बात है. यस, वो लेके गया. ठीक है. वो लेके गया डिनर पे. ठीक है. बट अब सेमेनियो को फोन करके ये थोड़ी बोलेगा कि साले मैं तेरे को डिनर पे लेके गया था, बिल चुकता कर. हाँ, यूनाइटेड आजा, विंग बैक खेल जा. ठीक है. तो वही वाली बात है. ही ट्राई टू कन्विंस, ही डिड हिज पार्ट, बट अगर वो सामने से सिटी को बोल रहा है तो वही वाली बात है. यश भाई, मेरा पॉइंट आप समझ गए. दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि उसको ठीक है, उसको एक ऐसे जगह पे इन्वायरमेंट में खेलने को चाहिए कि भाई जहाँ पे उस तरीके का प्रेशर ना हो, आवाज़ शोर शराबा ना हो. ठीक है. वो अपना आराम से वहाँ पे फुटबॉल खेल लेगा. आवाज़ तो वैसे भी नहीं आती. ठीक है. छोले भटूरे वाला ज़्यादा तेज़ी से शोर मचा लेता है कि भटूरे ले लो. तो एतिहाद में तो वो भी आवाज़ नहीं है. बट वही वाली बात है. आई कीप ऑन सेइंग कि अगर वो सिटी जाता है तो उसके अपने रीजंस हैं, एंड दैट वन ऑफ दोज रीजंस इज द पीएल मेडल. दैट पीएल मेडल इज द बिगेस्ट रीजन. ठीक है. एंड जो लोग बोल रहे हैं कि भाई सेमेन्यो के ऊपर सॉरी ग्वार्डियोला का डिपेंड करेगा कि भाई ग्वार्डियोला रहता है नहीं रहता है. बट देन अगर 6 महीने के बाद ग्वार्डियोला चला भी जाता है ना, और अगर ये Yeah. पीएल मेडल जीत के उसके बाद चले जाते हैं, ही वोंट माइंड दैट एट ऑल यार. ही वोंट माइंड दैट एट ऑल. Life Ops is saying, why would he come to a city as a winning team, better squad 4 5 years ahead of? Van Persie put his Arsenal reputation on the line because of Sir Alex Ferguson. Let's use ये an वही वाली example बात. that is related to us, Life Ops, and भाई देखो. he'll get his Premier League medal. But then what? Because नो you सी दैट. one thing this is going to, and I don't mean to trigger City fans because I don't know if there are any, and I don't know when they नो, started playing. चैट में मेरे एक दो है, बट वो Huh, ढंग के हैं. huh. दे No, दे no. दे I'm just saying because I don't want to upset. I हाँ. just want to tell them what I remember from Manchester City, which is या Manchester City had money before Pep,
and they'll have money after Pep. But they Yeah. were not as successful before Pep, and they won't be as successful after Pep. After absolutely. So understand one thing. That doesn't mean Man City is going to be a shit club. No, it does not mean that. But what it Yeah. does mean is the drop off will happen, and it can't be Exactly. denied. Money is not going to Exactly. save you from that drop off. Exactly. And that is like a startup with an owner bragging about his company where employee needs to do 5 jobs. It is multinational company with clear responsibilities. Fair Which I enough. would As a, you know, that's a really good example. That's a well really good said. example. Well said. That's what I'm trying to say as well. Yeah. कि अभी वो देखेगा at the age of 25, and when we talk about a certain man Percy, सर एलेक्स इन चूतियों के साथ भी पीएल जीत जाएंगे. सर एलेक्स इन चूतियों के साथ भी पीएल जीत जाएंगे जो टीम में हमारे साथ रुके हैं ना. ठीक है, इनके पास भी 2-2 3-3 पीएल मेडल होते हैं. Let's be honest. So Van Persie, when he risked his reputation, it was for Sir Alex. Yeah. सेमेनियो के पास है ग्वार्डियोला और सेमेनियो के पास है रूबन हेरजे लैमरिन. ठीक है, सेमेनियो नोज वेयर ही हैज टू गो. ठीक, एंड वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड एक अपनी पोजीशन में खेलेगा. वहां पे लेफ्ट बैक नहीं खेलेगा सेमेनियो. ठीक है, वहां पे सेमेनियो विल प्ले हिज ओरिजिनल पोजीशन. दैट्स व्हाई ये आई थिंक ये एक गिमिक है. एंड करेक्ट मी चैट इफ आई एम रॉन्ग. ठीक है, आई थिंक इट्स अ गिमिक दैट वी आर फीडिंग रोमानो कि भाई सिस्टम चेंज कर देंगे जस्ट टू एकोमोडेट, कि भाई सामने वाले को बड़ा ऐसा फील हो कि भाई क्या बात कर रहे हो, मेरे लिए सिस्टम चेंज कर दोगे. हाँ, कल तक तो बोल रहे थे इवन पोप कैन नॉट चेंज माई सिस्टम, अभी तुम मेरा सिस्टम चेंज कर दोगे फॉर मी. हाँ, फॉर मी. तो वो वाली बात है. ठीक, अब सेमेनियो को ले आए उस तरीके से उसका. ठीक है, तो वही वाली चीज है. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास लिटरली अपार्ट फ्रॉम रूबन एमडिम का डिनर वी डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर. ठीक है, वो भी डिनर में भाई ने क्या पैसे दिए, कितना महंगा डिनर था, वी डोंट नो. ठीक है कि वहां बेलुगा कैवियार था कि वहां पे बस बटर Believe चिकन, me, वो भी इंग्लिश. if we to get trolled more, no, Semenyo will just reimburse him once he's at City. Easy to या give the check. एग्जैक्टली. सिद्धार्थ भाई पूछ रहे जस्ट जॉइन सेमेनियो का क्या चक्कर चल रहा है. सिद्धार्थ भाई, सिटी पुश कर रही है सेमेनियो के लिए. ठीक है, सिटी वांट्स टू गेट डन विद द डील. हाँ या ना, जो भी है जल्दी जल्दी खत्म करो. इफ देयर इज नो सिटी, अगर वो सिटी को मना करता है तो समझ जाओ यूनाइटेड आ रहा है. दैट्स इट. फॉर मी देयर इज नो लिवरपूल कंपटीशन बाय द लुक्स ऑफ इट. सो दैट इज व्हाट इट इज. शशि भाई थैंक्स अ लॉट. बट भाई लोग आज के लिए बंद करते हैं. 12:30 हो गए. भैंस की आंख बात करते करते पता ही नहीं चला. मतलब फिर वही वाली बात है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट अ सर्टेन रूबन एमरिम एंड उसके टैक्टिक्स, तो फिर 2.5 घंटे तो बहुत कम है. मतलब वो तो रात के 12:30 बज गए, वरना तो हम 2-3 घंटे और भी कर लेते ना, तब भी वी वुड हैव केप्ट ऑन गोइंग. थोड़े कमेंट्स है बिफोर वी गो. सागर भाई बोल रहे हैं सेमेनियो विल चूज सिटी. एज आई सेड, आई वोंट बी सरप्राइज्ड. ठीक है, पेप वर्सेस मोंगलर मोरिनियो. आई वुड रादर प्रेफर मॉर्गन रॉजर्स. मॉर्गन रॉजर्स आपको प्रेफर नहीं करेगा ना भाई. प्रेफर तो मैं भी डिएगो डालो को करता हूँ, वो Akoro, मेरे को थोड़ी प्रेफर करती है. I would take Diego Dallo just for the banter, no, for everyone else. Yeah, But see, what, that's what I'm but saying. no, but Morgan, see, the thing is, no, Akoro, this is the thing. We have a lot of preferences, but what these people are looking at, no, is a whole different story. Exactly. We are looking at Conor Gallagher, who has a contract till 2028. He does not want to play in Spain anymore. He's seen enough of Simeone. All of us have to be honest. And he doesn't want to be there. And he's Yeah. actually doing well there. Like, people, apparently he actually does well at Atletico Madrid. He doesn't want to be there till 2028. So we are looking at Conor Gallagher. Ruben Neves doesn't want to be there anymore. So here we are looking at Ruben Neves. We are not looking at people who want to be where they are, no, and we can turn their heads. Everyone's heads are turned, no, they're looking at us before we are looking at them. This is the problem. Exactly. These are the भाई players we are in for. लाइफ ऑफ मैं इस पे एक चीज बोलूंगा यार. ठीक है, कैन प्ले फ्लूइडली. अरे नहीं खिलाना मेरे को फ्लूइडली यार. मेरे को नहीं खिलाना फ्लूइडली. मेरे को प्लेयर्स को पोजीशन में खिलाना है. ठीक है, तुम वो नहीं खिला पा रहा है, तुम फ्लूइडिटी की बात करते हो. कुनिया एम्बुमू को 2 मैचेस में स्ट्राइकर खिला के देख लिया, एम्बुमू के टट्टे शॉट हो गए. ठीक है, 2 मैचेस को कुनिया तुमने खिलाया, स्ट्राइकर कुनिया के टट्टे शॉट हो गए. वो गेम में दिखाई नहीं 2 मैचेस. ठीक है, वो नहीं है भाई. जस्ट बिकॉज ये फ्लूइडली के नाम पे जो है ना कुछ भी कर दो. हाँ, क्यों? क्योंकि 3 प्लेयर्स इंटरचेंज कर सकते हैं. अरे उस चक्कर में उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है? नहीं हुई है. क्या जब वो उस पोजीशन में खेले, क्या जब कुनिया स्ट्राइकर खेला क्या उसने गोल मारा? क्या जब कुनिया स्ट्राइकर किया तब खेला तब उसने बॉल ड्राइव किया? क्या एम्बुमो जब स्ट्राइकर खेला तो एम्बुमो तो राइट से लेफ्ट पे चला गया था भाई अगेंस्ट
स्पर्स, तो पूरे मैच में एम्बूमू दिखा ही नहीं था। सो फ्लूइडली के चक्कर में हमको वो चीज़ नहीं चाहिए भाई। अभी पहले अपने बंदों को अपने सर्टेन पोजीशन में ही खिला के रिजल्ट निकाल लो। ठीक है, एज आई सेड कि अगर वो कुनिया को सोच रहा है कि कुनिया को खिला देते हैं स्ट्राइकर, ठीक है, सेमेनियो को खिला देते हैं एज अ विंग बैक, तो भाई ये सॉरी सेमेनियो को खिला देते हैं, फिर तो मेरे को विवेल को देखना है भाई, मैं सही बता रहा हूँ। मैं तब बता रहा हूँ, मैं तब मेरे को विवेल को देखना है कि अगर उसका शाइनिंग स्टार, उसका प्रोडिजी 70 मिलियन जिसके लिए वो रो गया, ठीक है, तो अगर वो लेके आता है तो फिर क्या होता है। बट चलो भाई लोग, आज इतने पे ही। अच्छा, प्रतीक भैया बोल रहे फब्रिजो इज वार्मिंग अप, अभी तो सेमेन्यो सागा, अरे वो तो सागा नहीं बनने देगा, सेमेन्यो सागा नहीं बनने देगा। ये तो फोन कर रहा होगा सेमेन्यो को कि एक काम कर भाई, 10 दिन, बस 10 दिन, मेरे को 10 दिन मिल्क करने दे, ले कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। सेमेन्यो बोलेगा अबे चल हट, खत्म कर। तो ये वाला सीन है। देर इज नो मच डिफरेंस बिटवीन सेमेन्यो एंड अमाद हीट मैप ऑन पेपर सिम्स डिफरेंट, बट राइट विंग बैक अमाद एंड भाई राइट विंग Hmm. बैक अमाद डज नथिंग। Hmm. ठीक है, But सेमेन्यो he's प्लेयर्स saying position. No, he's saying position on paper. He's saying the पोजीशन। map is similar. मेरे भाई, या Interesting. हरिजन मेरे भाई, ही प्लेज फॉर बॉर्मथ। आप बात भी समझो। Good point. That is a you good point. cannot take you cannot take that out of context। ठीक है, वहां पे फटी में खेलते हैं आधे टाइम, सारे बंदे 100% पीछे घुस घुस के एवन निल्सन ट्रैक बैक कर रहा होता है। ठीक है, आपने आपने देखा है एम्बुमू को देखा है आपने वहां पे बिल्कुल जाके अमाद को हेल्प करते हुए? बहुत कम करता है, करता है। अगर जो वहां पे जो अमाद को हेल्प करता है वो साइड वाला सेंटर बैक करता है। ठीक है, दैट राइट सेंटर बैक गोज आउट एंड हेल्प्स अमाद। ठीक है, आपने कितनी बार देखा है एम्बुमू को पीछे जाते हुए? यहाँ पे जब फुल बैक्स खेलते हैं, जब करकेस था तब, या अभी जो बंदा खेल रहा है हिमेनेज या जो भी है, ठीक है, सेमेनियो जाता है पीछे। ठीक है, ही हेल्प्स आउट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एक होना कि भाई मेरे को हेल्प करना है, और एक कि साले मैं तो बंदूक तान दूंगा, भोसरी की हेल्प कैसे नहीं करेगा, वो अलग की चीज है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। वो अभी अपनी मर्जी से वहां जाके हेल्प कर रहा है, एक दो मैचेस में नहीं करेगा ना तो उसका रोल खराब नहीं हो जाएगा। यहाँ पे उसको वीक इन वीक आउट 90 मिनट्स वही चीज करना है, एंड ही कैनॉट गेट अवे फ्रॉम दैट रोल फॉर 90 मिनट्स। दैट इज द पॉइंट, है ना। तो सेमेन्यो अगर आता है तो अगर आप उसको आगे खिलाते हो, फेयर इनफ। ठीक है, इफ यू हैव सर्टेन पोजीशंस इन माइंड, फेयर इनफ। बट अगर आप उसको लेफ्ट विंग बैक लेके आ रहे हो, आई डोंट वांट हिम टू प्ले इन दैट पोजीशन। दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सेमेन्यो क्या लगता है कहाँ जाएगा? भाई सिटी मुझे तो लगता है, बट ये हम पूरे उसमें हम बात कर चुके हैं कि कहाँ जाएगा कहाँ नहीं। रूबन एमरिम इज नॉट मेकिंग प्रिंसिपल ऑफ प्ले राइट, व्हाट इज डूइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके व्हाई दे आर। भाई वही तो बोल रहा हूँ ना, दैट्स व्हाट वी आर ऑल सेइंग दैट आल्सन, Yeah. दैट्स व्हाट वी आर ऑल सेइंग दैट, है ना। ट्रफर्ट खेलता है सेमेन्यो के साथ, एग्जैक्टली exactly। नहीं नहीं भाई, सेमेन्यो आता तो फिर तो सेमेन्यो का लाल कलर का पूरा जर्सी वर्सी पहना के मैं बिल्कुल अभी, ठीक है, वो हो चुका होता, बट अभी नहीं आया है भाई, आएगा नहीं आएगा, वी विल हैव टू वेट। तो क्या होगा फिर? तो केवल फिल्मिस की तरह हार हो जाएगा। व्हाट्स योर थॉट्स वो भाई भाई वो का क्वेश्चन, यू टेक दैट। I mean, दैट्स अ वेरी गुड सॉलिड पॉइंट वैसा है। in fairness, no, in fairness to Calvin Phillips, where he could play when there were players better than him. At least Semenyo is in a position, no, where if the players want to leave, they will have demand. या Calvin Phillips didn't have that kind of. So the एग्जैक्टली people that he will possibly replace, no, will be good enough to go somewhere else. Whereas Calvin Phillips was supposed to be there next to Rodri and Gundogan, who already are better than him, and he has one season's worth of money in the bank. Dubai. So to me, it's very different in that sense, because he can still be a talisman for the team if someone else leaves. Whereas Calvin Phillips was never, ever, ever going to be the talisman of that team. एग्जैक्टली Everybody would have to get sacked, sold, injured, no, for Calvin Phillips to be the talisman of that team. So there's a एग्जैक्टली little difference there. And also, like I said, post Pep, how many players might want to go? Who's left? Antoine Semenyo can't say, man, I played at Bournemouth and I played at City half a season. Now take me somewhere else. It doesn't work like that. People will be like, you sit there, Baba. No one's paying 80 million for you. Someone just paid 60 million for you. No one is paying 80 एग्जैक्टली million for you. We'll see you in 2 years' time. Then we'll be interested. एग्जैक्टली
And Semenyo doesn't have मतलब 2 years worth of time because he's already 27. He'll be 30 years old by then, and that's it no, for no, him. 7 is 25, bhai. 27 He's is only 25. 25. Okay, so in Yeah, 2 years' time, he'll be 27, 28. yeah, He might get one good contract if he maintains his form. exactly, One good contract. Very exactly. tough. जॉब हमें तो नहीं लाना है, लेकिन सेमेन्यो लाना है भाई। रूबन नेवेस के ऊपर वी विल ट्राई। जॉन नेवेस वी आर नॉट लुकिंग राइट नाउ, सो वी विल सी कैसा होता है। बट गाइस, एज आई सेड, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यार। अब थोड़ा सा चला जाए, कल सुबह ऑफिस भी करना है। नेथन विल ऑल्सो रेस्ट भाई, क्रिसमस ईव है तो ही विल बी वेरी बिजी एज वेल। सो Yeah. नेथन, आई विल ऑब्वियसली बी विशिंग यू ऑन द टेक्स्ट एज वेल, बट अ वेरी Thank you. मेरी क्रिसमस इन Thank you, एडवांस। guys. Thanks a lot for giving so much time, No, and no, as I not keep at on all. saying, guys, please subscribe to his channel whenever he is live, whenever we are, whoever you are subscribing to, hit that notification bell on, so that we don't miss out on you and you don't miss out on us. Of course, if you guys won't show up, and I always say, good guys, bad guys, I don't care, as long as you have respect for the people you are listening to। ठीक है, आपको जो लगता है आप अपने हिसाब से बात करो, आप किसी का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने का ट्राई मत करो, वो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, यू आर नॉट हेयर टू बेसिकली कि भाई ये ऐसे वो वैसे, आपका एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू है, वी कैन डिबेट कि भाई ये ऐसा नहीं है And वैसा हो। also, if you are right, we can 100% say you are right. If या your एब्सोल्युटली, theory is proven correct, we can. You should not. You should be humble enough to admit when you're wrong. That is एग्जैक्टली, the main thing. एग्जैक्टली, As fans, as content creators, it should be that kind of balance at least. Even if you can't convince them in real time, you can always एग्जैक्टली, offer an apology and say you were right, I was wrong. You know, I think एग्जैक्टली। it's बट fair. चलो भाई लोग, मिलते हैं होपफुली कल। इफ आई एम सोबर, देन आई विल डेफिनेटली बी हियर, बट टुमारो इज क्रिसमस ईव एंड आई डोंट back my chances of being sober tomorrow, so You're going for like a Christmas party, like to bring in the night. They have it in Delhi. I don't know what is the yeah, scene. yeah. You're going? Like I don't go like a proper Christmas party, मतलब Ah, हमारा वो खुद का हो गया, like like but with there your are, friends. With your friends. yeah, I have Yes. friends but then they'll stay very very far। Yeah. ठीक है, फिर अब वहां पे जाऊंगा क्रिसमस वाले दिन, तो उनके घर वाले हमारे को निकाल देंगे कि साले आ गया बच्चे खराब करने हमारे। तो वो भी नहीं होना चाहिए। चलो भाई लोग, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल होपफुली, अदरवाइज वी विल डेफिनेटली मीट ऑन 25th और 26th। 26 को तो हमारा मैच ही है रात को। Mm. We are playing Newcastle on Friday night, so matches are coming thick and fast. So have a very festive time ahead. Be safe. Yeah. Keep the notification on to both the channels so that you don't miss out on any video. Take care. Stay Yes. safe. Good night, Good guys. night.